एक 10 मिनिटं थांबा. So madam is into the meeting, so she want to check some audio and video visuals. So we have to give some time to Tripti madam. Madam, तुम्ही online असाल तर you can check your audio and video also. हा सर, पीपीटी शेअर केले मी, बघा तिकडे दिसते का? दिसते मॅडम, दिसते मॅडम. ओके. आणि जर तुम्हाला विज्युअल असेल तर तुम्ही तुमचा ऑडिओ करायचा आहे. कॅमेरा ओपन ठेवा जर तुम्हाला विज्युअल म्हणजे तुम्हाला विज्युअल ठेवायचं असेल. ओके. नाही, मला एक व्हिडिओ शेअर करायचा आहे. जर मॅडम इथून व्हिडिओ जर युट्यूब वरून घेतलेला असेल तर मग मला ते पायरेटेड व्हिडिओ नाही चालणार मॅडम बरं का, कारण मग ते सिस्टम पूर्ण डाऊन होऊन जाते, युट्यूब ब्लॉक करून टाकतं सगळं. नाही, हे नाहीये, पायरेटेड नाहीये. मी तुमच्याशी लिंक शेअर करते, तुम्ही ती सगळ्यांची लिंक शेअर करा. आज तो मुलगा नाही मॅडम तिकडे युजीसी मध्ये ना, त्या HRDC मध्ये त्यांचं आज काहीतरी कॅश काउंटर काहीतरी मीटिंग आहे. तो नसल्यामुळे ते तिथून तुम्हालाच करावं लागेल, जसं तुम्ही शेअर करताय ना इथून. नाही, एक मिनिट बघूया. हा, कारण मला ही तुम्ही सगळं टेस्ट करून घ्या मॅडम, मग आपण चालू करू. जी लिंक दिलेली आहे ते त्यांचे ते बघू शकतील. इथून हा, शेअर मग करायची तुम्ही गरज ह्याच्यावर पडणार टाका नाही. ना लिंक, ग्रुपवर मला टाका, मी ग्रुपवर टाकून देतो. ओके ओके, ठीक आहे. आणि आणि तुम्हाला ही नंतर जेव्हा करायची आहे. हा, हा ना, नंतरच करायची आहे, त्यावेळेला आपण करूया मग. हा तर मग तुम्ही लिंक जनरल करतो मी ग्रुपवर, मग त्यांना ओके. ओपन करायला सांगतो, ते पाहतील, मग तुम्ही त्याच्यावर बोला म्हटलं. हॅलो सर, आता हा. पीपीटी दिसतेय ना, त्यामुळे तुम्ही आता सुरू करू शकाल काय, तुमचं असेल त्याप्रमाणे. येस येस मॅडम, फक्त तिला प्ले करा, खाली बटन आहे बघा एक असं, हा ते बरोबर, एक्झॅक्टली. इफ यू स्टार्ट सो दॅट इट विल स्टार्ट, इट विल रन. ओके, या, इट्स फाईन मॅडम. Now I request roll number 42, please start with madam's introduction. Good morning everyone. So I am Dr. Amal Indurkar, Department of English. So I am introduce today's resource person, Dr. Tripti Karekati. So it gives me immense pleasure to introduce today's distinguished resource person, Dr. Tripti Karekati. She is currently serving as a professor in English and in charge head Department of Hindi and coordinator Sharan Sahitya Adhyasan. She has over 25 years of postgraduate teaching experience, having taught at the Shivaji University, Kolhapur and McGill University. She holds MA and PhD in English, MA in Marathi, a certificate course in Russian, and a bachelor's degree in instrumental music. Dr. Karekati has held several important academic positions, including former head of Department of English, former chairperson BOS in English and Linguistics, and former member Academic Council, Shivaji University, Kolhapur. She has also served as a member of the Academic Council, Wellington College, Autonomous. Her research contributions are remarkable. She has published over 50 research articles in international journals, contributed 15 chapters to books and manuals, presented paper in international seminars, and delivered more than 20 keynote addresses, including 15 lectures in UGC HRDC courses. She has successfully supervised 8 PhD scholars awarded and is currently guiding 7 PhD scholars along with the along with 6 MPhil dissertations. She has also completed 4 major research projects funded by UGC and ICSSR New Delhi. In 2025, she has granted 2 patents by Government of India in the field of gardening and agriculture, reflecting her interdisciplinary research excellence. She has been featured consecutively for 2 years in the ad
scientific index as one of the highest impact researchers from Shivaji University and is the only faculty member from language departments to achieve his distinction. Her international exposure includes academic visits to Taiwan, Ethiopia, Kenya, and Czech Republic, France, and Germany. Her scholarly impact is reflected in a Google Scholar citation of 184 with an high index of 5 and I-10 index of 4. Dr. Karekati areas of specialization include applied linguistics, social linguistics, drama, and gender studies. She has also creative writer and translator her short stories in her urban maze of been published internationally, and she has translated and edited several significant works, most notably a Marathi English bilingual dictionary authored by her was published in August 2025. She has received several prestigious awards, including the second prize at the national level of All India Radio and Translation and Outstanding Teacher Award from the Rotary Club of Gargis, Kolhapur. We are indeed privileged to have such a accomplished accommodation and research with researchers with us today. I now request Dr. Tripti Karekati to kindly take over the session. Thank you. Thank you very much for a kind introduction. Yeah, can you hear me, everyone? Am I audible enough? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the Madam, slides yes, are madam. audible enough? So, Yes, as yes. you can see, today I'm going to talk on language, gender, and power. And this is partially a linguistic study, and to a great extent, this is also cultural studies project. So these things are not very new to you. I just want you to do some introspection on our languages and the way we work and imbibe the cultural values, especially of the patriarchal society. To begin with, let me know what is the language background of the participant. How many of you are from Hindi belt, or you have Hindi as your mother Madam, you tongue? can speak into Hindi and English No, no, because that's the not. I'm candidates not are asking for all over purpose from of India. medium. I'm asking for the purpose of I need to know what is your mother tongue. How many are from Hindi mother tongue Lot language? of students are from Hindi belt, madam. Okay, and Marathi with So Marathi mother tongue. Marathi mother tongue, near about 25 students from Marathi mother tongue, Half but of the Hindi candidates and are all over from India. okay. Till So what are the North. other languages we have with us today? Because more languages is going to be richer. Even Northeast students also Good, participated into this good, work. good. So Assam No, from from Bengal. Northeast. Northeast. Okay, which Uh, state? who are from Northeast, please tell their introduction. Yesterday, that madam has read a introduction of madam. Yeah, Roll she's number number 37. roll number 36. 37, 37. 37. Roll number 37 is present into the class. She is not present, madam, today. All right. And anyone from South Indian languages? Anybody from South India? Sir, this is roll number 39 from Tamil Nadu. Good, Tamil very Nadu. good. She is from Tamil Nadu. Okay, fine. So I want you to think about your languages. I'll start with some examples with English. Yes. I know Marathi and Hindi, so I'll talk about them, and I've collected some examples from Bengali, Assamese. So I'll start with those examples. But And for their convention, if you speak into Hindi also, yeah, that would be I'll try better. to speak in both the languages. जहाँ Okay. पॉसिबल है वहाँ मैं बहुत हिंदी में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि दोनों लैंग्वेजेस में बात करूं। और हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो सभी लैंग्वेजेस से, इंडिया के सभी लैंग्वेजेस से लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मेरा एड्रेस होगा वो वन साइडेड नहीं होगा। जितना आप उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उतना हमारे हाथ में ज्यादा से ज्यादा लगेगा। So let me begin. Yes, madam, you Just, can start. just tell that the slide has moved on.
Sometimes Yes, it yes, the talks slides are moving. The slides all are right. moving. Thank you very much. So what we are going to do, we are going to Slides explore. are moving. Yes, pardon. Candidate, please off your mics because madam has started her presentation. So be aware about your mics because surrounding sound coming into the lecture. All right. So we are going to look into women's speech patterns. As my title suggested, भाषा में जब हम भाषा यूज करते हैं तो पुरुषों के बात करने का तरीका कुछ अलग है और स्त्रियों का अलग है, ऐसा कुछ हो सकता है का क्या, ये हम एक्सप्लोर करने वाले हैं. So what I'm going to do is this presentation is going to delve into the fascinating intersection of language, gender, power. So how these things come together. It is not just that पुरुष अलग तरह से बात करते हैं, महिलाएं अलग तरह से बात करते हैं और अलग है, उसका स्टडी हो गया बस, इतना करने की बात नहीं है. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो पावर का है. तो जो कॉम्बिनेशन है, जो लोग आए हैं एक स्पीच एक्ट में, जो इकट्ठा लोग हैं, तो उनमें पावर स्ट्रक्चर कैसे है, इस पर निर्भर करता है कि हमारी बात करने का तरीका कैसा होता है. तो ये देखने के लिए हमें कुछ पीछे जाना होगा. पहले शुरू करते समय मैं बहुत न्यूट्रल एग्जाम्पल से शुरू करने वाली हूँ और उसके बाद आप अपनी अपनी लैंग्वेजेस का डेटा मेरे साथ शेयर करेंगे. अभी मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, एक ब्रिज है, आपको दिखाई पड़ रहा है. तो जो लिखा है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और इस ब्रिज के लिए अगर मैंने आपसे कहा कि इसके लिए विशेषण बताइए, टेल मी एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब दिस ब्रिज, व्हाट एडजेक्टिव्स विल कम टू योर माइंड. कौन से विशेषण आपके मन में आएंगे? दुआ. दुआ. ओके. दुआ काय आहे? विशेषण आहे, नाउन आहे, व्हॉट इज इट? अगदी सोप्या सोप्या ऍडजेक्टिव्ह पासून आधी सुरू करा. स्टार्ट विथ सिंपल ऍडजेक्टिव्ह लाईक सुंदर आहे, मोठा आहे. मोठा आहे, सुंदर आहे. ओके. कीप ऑन गोइंग ऑन अँड आय वॉन्ट ऍडजेक्टिव्ह फ्रॉम डिफरंट लँग्वेजेस, लँग्वेज बॅकग्राउंड. Madam from Tamil Nadu, how will you describe this bridge? It's a long bridge, ma'am. Long, okay. Very narrow. And think of adjectives from your language. मॅडम चालताना पडण्याची भीती वाटली आणि पाण्यात बुडालं तर? Okay, try to express this in one adjective. मराठी स्पीकिंग जे टीचर्स आहेत ते सांगा की ब्रिजला तुमच्या डोक्यामध्ये काय येतोय, शब्द काय ब्रिज म्हणजे? जोडणारा किंवा अन्वयी. बेसिकली नाउन काय आहे? ब्रिज म्हणजे पूल. आणखीन काही शब्द आहेत का पुलासाठी आपल्याकडे? पूल. पूल. ओके. हिंदीमध्ये काय म्हणतात? सेतु है मैडम. सेतु. सेतु है मैडम. सेतु. हाँ. हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी सेतु कहते हैं मैम. सेतु ही कहते हैं. ओके. पुलिया कहते हैं मैडम. पुलिया. ओके. अब पुलिया को आप डिस्क्राइब कैसे पुलिया कहते हैं. क्या पुलिया के पीछे कौन से एडजेक्टिव लगाएंगे? क्या बोले मैम? पुलिया के पीछे आप कौन से एडजेक्टिव्स लगाएंगे, विशेषण कौन से लगाएंगे? बड़ा पुलिया, बड़ी पुलिया, क्या है? पुलिया बड़ा फेमिनाइन पुल. लगता है. अगर पुलिया है तो क्या? बड़ा पुल हो सकता है. पुलिया के लिए क्या? पुल और पुलिया में कुछ फर्क है क्या? छोटी होती है पुलिया. छोटी होती है. ओके. और पुलिया को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा एडजेक्टिव लगाएंगे? जोर से प्लीज. छोटी पुलिया हो सकता है. छोटी पुलिया. ओके. बड़ा पुल, छोटी पुलिया. अभी एक क्यों दिखा है, मैंने वो डेटा भी शेयर किया है आपके साथ, तो आप देख सकते हैं. ये क्वेश्चन लेरा ब्रोडस्की ने जर्मन और स्पेनिश स्पीकर्स को पूछा. एक पुल दिखाया और पूछा कि उसको डिस्क्राइब कीजिए. तो जर्मन स्पीकर्स ने एडजेक्टिव्स कौन से यूज किए? ब्यूटीफुल, एलिगेंट, फ्रेजाइल. फ्रेजाइल मतलब नाजुक,
धक्का लागला तर तो मोडू शकेल असा, म्हणजे ज्याला जपायला हवा असा. स्पॅनिश स्पीकर्स डिस्क्राइब इट एज टॉवरिंग, डेंजरस, विगरस, स्ट्रॉन्ग. और अब देखिए इन एडजेक्टिव्स में कितना फर्क है. ब्यूटीफुल, एलिगेंट, फ्रेजाइल on one hand and dangerous, strong, vigorous on the other hand. So why is this difference coming? So she investigated this phenomenon and found that in German, the word for bridge is feminine, and in Spanish language, it is masculine. And this delimits the way we look at the world. भाषा आपकी कौन सी है और उस भाषा में उसको मैस्कुलिन कहा गया, मैस्कुलिन उसका पार्ट ऑफ स्पीच है या फेमिनाइन है, ग्रामर आपकी लैंग्वेज की कैसी है, इसके हिसाब से आप वो ब्रिज को अलग तरीके से देख रहे हैं. तो कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स वाला दिखाई पड़ रहा था और कुछ स्पीकर्स के लिए वो फेमिनाइन एट्रीब्यूट्स वाला दिखाई पड़ रहा था. इतना फर्क होता है. यहाँ तो हम कोई स्त्री पुरुष की तरफ नहीं देख रहे, स्त्री पुरुष एक आपस में बात करे ये नहीं देख रहे. एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है ब्रिज, और ब्रिज को बहुत अलग तरीके से दो लैंग्वेज वाले डिस्क्राइब कर रहे हैं. अब एक मैंने नीचे एक लिंक दी है आपको, यूट्यूब की लिंक है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ी समय बाद आप अपने अपने डिवाइस से ये लिंक देखने वाले छोटी सी 6 और या 7 मिनट की टॉक है, टेड टॉक है, लैंग्वेज से है, और वो बताती है कि लैंग्वेज कैसे हमारा दुनिया को देखने का तरीका डिसाइड करती है. इट इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट जेंडर व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक हियर. ऑलराइट, तो मैं आपको टाइम देती हूँ, थोड़ा सा वो नोट कर लीजिए तो ये जो लिंक है. मैडम चैट बॉक्स में भी डाल देंगे तो चलेगा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा अगर कोई वो टाइप करके डाल सकता है ना, या फिर आप यूट्यूब पे जाके लेरा बोरोडिस्की का टेड टॉक सर्च कीजिए, ये मिल जाएगा आपको. ओके, सो कैन आई मूव अहेड? मैम किसी ने नोट डाउन कर लिया है ना? आपका कोई जो भी ग्रुप लीडर होगा, someone should type this in the chat box and share with everyone. Can we move ahead? Yes, ma'am. Okay, now we are coming to our languages. I am giving here examples, and these examples are meant to make you think. This is not trying to delimit this thing, because I know 3 languages and I've taken examples from the 3 languages. We are going to look at other languages. Now look at this example. If I give a simple question, what we have been doing from school days, change the gender. Man, I want answers from you all. So simple enough: man, woman, king, queen, poet, poetess. Now all languages do not have this. Think of your language. Does it differentiate between a poet and a male poet and a female poet? Not all languages have this distinction. Now we come to more difficult part. Widow. In English we have a word widower. Widower. Think of Marathi. Vidva. So what's the masculine gender for widow? Vidva. विधुर. Vidur. Viduri nahi. Vidur. Next word. Miss, Mrs. This is in English. What do we say in when we change the gender in English? It's Mr. So for Miss also it's Mr. Mrs. also it's Mr. So I hope you have started realizing how it works. In Marathi, Kumari, it's almost always shortened to Ku. So if it's an unmarried girl, it's Kumari, and if it's an unmarried man, Shriyut, shortened to Shri. So that is Saubhagyavati. If she's married, she's called a woman. A married woman is addressed with Saubhagyavati, and a man is addressed with again Shriyut. So there's no difference.
So how about English? Just like Miss and Mrs., you have Mr. Okay. Do you want to add here? All of you feel free. You can raise your hand or you can just uh, make your contribution here. So what's happening in your languages? What's coming to your mind? Maybe some questions, maybe some disagreements also. And Ma'am, yeah, ma'am, I'm from Tamil Nadu. yes. Here, for a widow, we have the word vidavai, but there is no word to describe a male there. We don't Male, have a specific widower. word. Yeah, we don't have a Tamil word for widower. Okay. Okay. So many languages do not have this word. So it's something unusual for in Indian context, in patriarchal system. As soon as the wife is gone, you are bound to marry and you are never a widower. So that's something which is assumed. Now let's turn to even more difficult words. These are, I think these are common for Marathi, Hindi. Yeah, do you want to contribute? Shriman, Shrimati. Shriman, Shrimati, yes, right. Shrimati. Now this is not something which was used earlier, and Shrimati also again has some other connotation. So if And a in woman has lost Marathi, her husband, Ganga then Bhagirathi, Gambha लिखते थे पहले widow yeah, ladies. लिखते थे, but it's no longer in use. And think of the connotations which come to your mind. Srimati. When do you use Srimati? It's not like neutral like Shriman. Shriman can be used everywhere. If you use Srimati, many women will not like that because it's assumed that if you have lost your husband, then the word Srimati is used. In English, you have a term Miss, Mrs. and you have MS, so, which is neutral. It does not tell about your married status. So you will notice that if in case of men, what's their married status is not revealed by these terms, and it is not expected that his status will be defined with reference to his marriage. Whereas a woman's status is always referred to with reference to her married status. Whether she is unmarried, she is already married, she is in marriage, she has lost her husband. What about Vidwa, Ran, Beva, Suhagan, Ardangini? Now, more and more these become culturally loaded terms, and they become what's the masculine form for this term? It's very difficult to even recollect this term. Think of Vidwa. Do we have a term for Vidwa? Loudly. I can't hear you if someone is answering. स्टिकर पाठवत बसत्यात डेकोरेशन का मन केलं मन झालं का तुझं लेक्चर Please mute yourself. लेक्चर नाही Someone's children are talking. मला वाटलं लेक्चर आहे तुझं Number 57. Number 57. Admin, can you take control of their mic? Can you mute from your end? Because it's in the hand of children, and children are seeing this and children are talking. Hello. Roll number 57. Can you hear me? Participants, can you hear me? Yes, madam. Okay, who is roll number 57?
Roll number 57, I want you to answer me. Vaibhav sir, are you here? Madam, we can hear you. No, but what is this? This roll number 57, some children were listening to this and they were talking. This is a refresher and this is live streamed. And she has turned this into a joke. 57. Yeah, she has muted herself just now. And for 5 minutes, some girl, school-going child was talking from there. And she was there. Now the camera was on. She just now, a minute before, she has muted herself and stopped her camera also. So this is very, very disturbing. I'm trying to make some serious point. Others, please tell me, what are these terms? Vidva, do you have some term for Vidva in your language? And the masculine form for Vidva? There No, was ma'am. one term, yeah, in Tamil. You had told me some term. What about Rand? Hindi term? This is roll number 53, ma'am. Yeah. For in Tamil, the term for a widow is vidavai. Yeah, that's the feminine form. And masculine form? Yes, ma'am. We doesn't have the. We don't have, yeah. Yes, ma'am. Okay. Is there something relevant for similar to Rand? Unable to catch you, ma'am. Once again, ma'am. Rand, Ma'am? it's written below Vidva. Yeah. Ma'am, what is Rand, ma'am? A woman who receives payment for sexual favor. That is your meaning prostitute, ma'am? Yeah, similar to prostitute, but this is a derogatory term. Not referring just to the profession. We call in Tamil vibachari, ma'am. For a woman, we have the term, but not for the men, ma'am. Not for the man. Okay. Beva. Hindi people, tell this. For Beva, do you have a masculine form? Now, when you come to Suhagan, this is not a negative connotation. It's very good, okay, Suhagan, whose husband is alive. But then why don't we have a term for men also? So she is happy enough, privileged enough. That is, this term has huge connotation of privilege. She is privileged to have her husband with her. So why don't we have such a privileged term for men whose wives are alive with them? So it's not considered a privilege. It's not considered to be something you're happy and blessed to have a wife. It's just your right to have a wife. Similarly, you have Ardhangani. A woman is Ardhangini of a man who shares all his good deeds and bad deeds. Half of these things come to her. But we don't have similar thing in Indian languages for men. So these are the very simple terms which immediately come to our mind. Now, I want you to think about these terms and we will go slightly to more complex things in English. And some of these things are also common with other Indian languages also. Now, look at these curious cases. In case of English, Mr. Kumar is a master of arts. इसको आप ट्रांसलेट करके अपनी अपनी भाषा में सोच लीजिए क्या होता है. मास्टर ऑफ आर्ट्स एक डिग्री है तो उसमें प्रॉब्लम आने की जरूरत नहीं है. लेकिन मास्टर ये टर्म जब हम कहते हैं कि वो एमए है, मैंने क्या किया है, एमए किया है. सो व्हेन आई से आई एम मास्टर ऑफ आर्ट्स, even if I'm a woman, I have to say master of arts. If you try to convert it, if you try to change the gender, it goes wrong, very, very wrong. Miss Rita is a mistress of arts. Meaning of mistress of arts is very, very different, completely different. He is a master of karate. She is a mistress of karate. This is wrong. Change in meaning, change in field, change in perspective, change in negative and positive connotations, everything happens.
Miss Rita declined to be his mistress and returned toward her husband. Now, this is the sense of mistress. But if you try to convert it, it's not that every time you have a masculine form and you don't have a feminine form. Sometimes you have a feminine form, but then you do not have an equivalent for in masculine gender. Mr. Kumar declined to be her master and returned to his wife. We don't say that. मिस्ट्रेस है, ठीक है, मिस्ट्रेस का अर्थ अलग है, लेकिन उसी तरह से मास्टर का अर्थ होता ही नहीं है. So try to bring a story in front of you. Rita has left her husband and she has become a mistress of someone, and then after some time something goes wrong and she leaves the person and comes back to her husband. So she is no longer mistress. She has declined to be mistress of X and returned back to her husband. So same thing happens with a man. He has left his wife and he is living with some other woman, and then he declines to have this relationship and returns back to his wife. But in the meantime, what are you going to call him? Because we do not have an equivalent for mistress. Is my point clear? So why do languages make these differences? Why are we so much partial towards one gender? Okay. Now let's look more closely at these two terms, bachelor and spinster. What's a bachelor? Juliet is waiting for the most eligible bachelor. Think of Jane Austen's novels. Most of these novels, mothers of young girls are eagerly waiting to find eligible bachelors for their daughters to marry. So Juliet is waiting for the most eligible bachelor. We can never say John is waiting for the most eligible spinster. So these two terms, even if they appear, okay, bachelor, give the feminine gender, it's spinster. No, it's not spinster because connotations are very, very different for the two terms. So who is a spinster? Mr. Pathan, please mute yourself. A spinster is by implication an unmarried woman, and especially the one past the common age of marrying, or a woman who seems unlikely to marry. So that is not the sense with bachelor. Bachelor is just an unmarried man, and everyone is waiting eagerly for a bachelor, and he is always eligible, almost always eligible. So a bachelor is just waiting to find the right girl to marry. And what about spinster? She is an unmarried woman. That is not the whole sense. She is unlikely to marry, and plus there are some sense of she is irritable, she is always angry, she is not like common girl who can become later on wife, who can be beloved. But spinster is something very, very different. John is a regular bachelor. This combination, regular bachelor, this means something different. But when you try to have similar combination with regular spinster, this often almost becomes obscene. A regular spinster means what? Again, the same kind of activity, but with some twist. Again, prince, princess, god, goddess, waiter, waitress, adhyapak, adhyapika, sampadak, sampadika, dev, devi, lekhak, lekhika, governor. Now these are all occupations. Governor, governess. Now, if you try to make feminine gender using the same kind of principle, the word is completely different. Because governor means who governs a state, and governess is the woman who takes care of children. So, please, Mr. Pathan, will you mute yourself? हे लेक्चर चालू आहे पठाण सर. Sorry, extremely sorry. Now look at these two words, governor and governess. Governor is, if it is a man, he can govern the state. He is the ruler over the whole state. But when you call a woman, with the same kind of attribute, same kind of way of addressing, who can she govern? She is not governing a state. She can just look after children.
Now look at this ways, the way we, the kind of um, use we make of some pronouns, some phrases, some idioms, some proverbs. These also talk a lot about our patriarchal system. Man is a social animal. What does that mean? What's a woman? It's included that woman is, we need not even talk about her. She is there in, when we talk about man, man is covering whole of human race. We will never say woman is a social animal because woman cannot be covering the whole human race. She cannot be generalized. She cannot be the representative of the whole human race. Brotherhood and mankind. These terms are used to mean both women and men. So when we talk about brotherhood, it's all human beings having a good kind of relationship with each other. Mankind refers to actually humankind. But if you say similarly sisterhood, it doesn't mean human race or good relationship of all people with each other. It's not all people. It's only a group of women who are often prone not to include men in them, and they have some kind of adverse feeling towards men. So sisterhood and womankind, this cannot be generalized to men. This speaks only of a special kind of um, development happening within women, but never about whole human race. When we take of other professions like policeman, fireman, chairman, these all terms have man in them, and we use them to speak about both the genders now, because we often have now, there are police women, but do we have a word like police woman? What should be the right term here then? Fireman. There are women in this profession. So when we talk about this profession, so why do we leave out these women? Is my point clear? So what should be the word for policeman? What do you suggest? Police person. Okay, but do we use this? Actually, almost all communities. Madam, we are using LPC, Ladies Police Constable. Police constable, yeah. Ladies Police, Lady LPC. police constable, but Haan. a lady police inspector. So it Yes. becomes so long, and it will not become part of common man's language so easily. It has to be easy enough. And we have got so much used to policeman when there are PhD vivas. And when I'm chairing the viva, all the documents that I receive from almost all universities, they have this word chairman, and I have to sign above this word chairman. None of the universities has thought of changing all the documents to make it chairperson. Chairperson is such a common term, but they do not want to change this. Often I get messages, hello sir, or good morning sir, or just mail sir, and then everything is continued, because these people think, even if they know that half of the population is consists of women, and there are many women in occupying these positions today, I need not take care of this. That is the feeling. Let's continue with the old way. Let women accommodate themselves. Let them make place for themselves, or let them get used to this terminology. Okay, you're sitting here. That doesn't mean that we are going to change our culture. We are going to change our language. Some countries are making these changes. For example, Sweden is thinking of a very, very neutral kind of personal pronoun, hen. Okay, this of course is from Swedish language, so it's not hen comedy from English. It has nothing to do with that. So which can combine together he and she, or many people when they are using English, they use the term he slash she, or sometimes it is she s slash he. So meaning he or she, or others use the pronoun they when they are referring to. So a student came inside the class. If you do not want to reveal the gender, or if you want to make it gender neutral, they sat on a bench. Even if you know that grammatically this sounds very, very absurd. Why are they using they? To mean
okay, I am ready to accommodate both he and she without making the change. What was the old method? If you did not want to specify the gender, you could use he. So if you're talking about students, if you're talking about teacher, the teacher said that, and in the next sentence he said that. So he refers to teacher. Teacher could be he or she, but when you use he, just like mankind, it meant both he and she, men and women. So there are some women and there are some feminist men also who invariably nowadays use she to refer to both he and she. So that is also change coming. We are yet to arrive at this position. Canadian Parliament has passed a bill to make the national anthem gender neutral. So they want to make the national anthem in Canadian language, in their anthem. There could be these terms, and they are trying to make it neutral. So people are becoming aware, and most of these changes are coming from Europe. France is pushing for gender neutral language. So similarly, we also in India need to make these things. Now, in case of English, these things are slightly easier because, like Marathi, we don't have each and every noun is not classified masculine, feminine, and neutral. It does not happen that way. But Marathi, Hindi, and many other Indian languages are loaded with gender roles. So that becomes difficult. Think of these terms. Samudra, ये हिंदी और मराठी दोनों को कर सकते हैं और जो बाकी की लैंग्वेजेस है तमिल नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेजेस so you can tell your terms for this. What's samudra? It's masculine pronoun or feminine pronoun? What will you use for this? Ma'am, in Tamil we use only feminine, ma'am. For samudra or everything? For sea we use only feminine. Okay, so what is samudra? It's samudra same word or Ali we use the word, ma'am. Okay, Ali, so yes, it's feminine. All right. yes, ma'am. Yes. Nadi. Nadi. We use the word aru in Tamil, ma'am. Aru, and that is also feminine. Okay. Dongar. Think of Hindi, Marathi, and other languages. Dongar, what is dongar? Dongar is mountain. Is it mountain, ma'am? Yeah. We only use feminine attributes, ma'am. So it's for all these terms, or is it only for the examples I've taken? Now let me talk about Marathi. Dongar is mountain. To dongar, am I right? To dongar, yes, ma'am. Tekdi. Ti tekdi. Ti tekdi. So why do we make a difference? Why not so tekdi? It's not just because it's ending with e. Most often it is samudra, which is something which is bigger is masculine, and something which is smaller is feminine in Marathi. Similarly, Yes. Hindi also, to a large extent, these things happen. Not always, but to a very great extent. Let me give some examples. Kersuni. Ti kersuni. Ti kersuni. Jadu. To jadu. Handa. So To you handa. understand these words? In Hindi Yes, also you yes. have these terms. Handa. A big handa, pot, ti often made of kersuni. copper. Yeah. And handi also you have a smaller handa Ti that was kalshi. handi. Kalshi. Yes. So when it's something is smaller, it becomes feminine, and if it is bigger, then it's masculine. Madam, can I give one example? Yes, please. Just like ती झोपडी आणि तो बंगला. The Right, bungalow is right. and झोपडी Bigger, is more prestigious, richer. So and झोपडी is, it means shelter, small shelter. yeah, shelter, small shelter, and so it's T. Now I'll give you two terms. Think of these terms and tell me what's the gender. Ma'am, can Karanja? I give one example, one interesting example? Yeah. Yeah. ती विलायची, ती दालचिनी, ती दालचिनी, ती विलायची, ती मोहरी, पण तो मसाला. Right. Right. You're right. Interesting, very interesting.
So Now, all the ingredients in masala are feminine, but when finally when the final output is there, that becomes the male. That is male, yeah, masala. masculine Thank gender. you. Similar, I'll give you two examples. Think of this word, karanda, karandi. Okay, what's karanda? It could be kunkwacha karanda. Okay, and karandi, ambachi karandi. So what's masculine and how is it related with size or prestige, or think about this, ponder on this and share your views. तो करंडा ती करंडी. Right. To karanda. To karanda. Now, if you, most of the times, if it is size, what's bigger is reserved for masculine. Now, in case of karanda, kunkwacha karanda, it's so small. And if you have karandi, actually karandi is bigger, in which you are keeping maybe onions or maybe mangoes or anything. So it's quite big, and in spite of that, it's referred to in feminine gender, karandi, even if it is bigger, much bigger than karanda. So why suddenly kunkwacha karanda becomes masculine? Who is using this? Women. Using the same criteria of size, it should be the kunkwacha karanda or karandi. So why karanda is becoming Kunku is associated with male. husband, male, or it could also be kunku refers to power, because power of man, the husband over wife, this also. And when you look at the hierarchy within women in our cultures, in the family structure also, a woman who has her husband is much above in the hierarchy than those who are yet unmarried, or those who have been left by their husband, or those who have lost their husband. So they are all down the rungs. So suddenly, doing away with the size criteria, you shift the language, grammar, and all the associated things, and prestige comes to, even if it is a small thing, it has power. So all these terms, the point I'm driving home is, these things are not just related to language and gender, it's also related to power. Almost all these things have something or the other to do with power. Now, power is uh, something else is also associated with power, that is agency. So, what is agency? Capacity of doing something on your own or independently. You have a say, or you have the right to do something. You have the potential and you have the freedom to do something. So, in English, this agency is applied differently. When you have invitation, जब आपको किसी शादी या किसी के इनविटेशन आता है, तो आपको उसमें वर्डिंग भी ऐसा होता है, और कहते समय भी ऐसा कहा जाता है, man and wife in English, you and your wife are invited. It's never wife and man, or wife and husband. Not like that. Wife or man, woman or man, wife and husband, not like that. So why does this happen? Another thing, which has not to do with husband and wife, but with parenting. Mothering means parenting, but fathering means creating. So is the mother not creating the child? No, she is just taking care of the child. So what is mothering? And this also goes to, even in linguistics, we have a term like motheracy. That the language which adults use when they are speaking with children. We don't have to learn that. The way we simplify the language and use a different pronunciation and intonation when we are talking to very young children, infants, we talk in a very different way when we are talking to children than we are talking to adults. So that is called mother AC. It's never called father AC. So that may come from as if only mothers talking this way. Actually, it is all adults talk in a different manner. But so this mothering it encompasses parenting, whereas fathering is not taking care of children. So as if fathers never take care of children. So this is again a kind of injustice on men also, and it also reveals the partiality in our society. So fathering is you are creating; he is the creator, and then other things are taken care by women. We have these terms like single mother.
nowadays slowly we get to hear single father, but single father means something different. And single mother, we have a different, what comes to our mind or what we visualize is different. When we say single mother, she is struggling to take care of children, maybe, or a single child, father is not there, he is not helping, she is earning, and she's taking care of the child. What about single father? It's so different. Means it's not like he has lost his wife, and or the wife is not present, and he is juggling with both this task of earning a livelihood and taking care of the home and the child. No, that is not the connotation. Single father means absurdly something different. So in a subtle way, our language keeps on privileging one gender above the other. It's not always that men are privileged. Sometimes it is also the other way around. And there is agency here. So who can do something, who has the ability to decide, who has the independence to do something, say something. And this is sexist language. Is there any thing you want to share, or if you want to comment, or you want to disagree, you can do that before I go ahead to the next point. All right. Now, sir, some more idiom. चूड़ी नहीं पहन रखी. A very, very common thing which you hear in Hindi movies. बांगड्या घातल्या नाहीत. So who says this? Who says this? आम्ही काय बांगड्या घातल्यात का? पुरुष This is, म्हणतात असं. yeah, and this is men, and often they taunt other men with this thing. And they are talking about their masculinity, their virility, and they can punish anyone to show off their courage, bravery, often verging on violence. So why do they have to say this? Why do they have to refer to bangdya, chudi? So women will keep quiet, and I am not going to keep quiet because I am a man. So in our language, these things are taught to children also from very young age. From very young age, they are, if you're crying, you're giving into feminine behavior. A young boy also should not cry. He has to be courageous enough, and he has to hide his feelings. Now these are songs. What are little girls made of? Sugar and spice and everything nice. That's what little girls are made of. What are little boys made of? Made of snips and snails and puppy dog tails. Now, because this is a child song, it doesn't mean too much snips and snails. But look at the phonology. You will see more rhyme and rhythm when you're talking about girls. And snips and snails and puppy dog tails, the combination of consonants sandwiching short vowels. This gives you terse kind of a feeling, just like the men's behavior. And everything softness is associated with girls, sugar and spice. The friction when you produce sugar and spice and everything nice. So, internal rhyme, end rhyme, plus alliteration, all these things produces assonance also. So this creates a positive sound system which brings nice things to your mind, and it's already saying everything nice. And that is not just the same thing. Puppy dog tails. What does that mean? Even if it may not mean much, the sounds create an impression that okay, boys are made of tougher things, girls are made of very, very decorative, harmless things. Boys are taunted with terms like sissy, and girls are taunted with terms like tomboy. When you look especially at girls only educational institutes and boys only educational institutes, you will find these terms very, very commonly used there. Other children using these terms for girls and boys. So which one is more hurting kind of term, tomboy or sissy?
हिंदी भाषिक लोगों के लिए अगर किसी लड़की को कहा ये टॉम बॉय जैसे बिहेव करती है, तो ये ज्यादा बड़ा इंसल्ट है, या एक एक लड़के को कहा है अरे क्या सिसी जैसा जैसा बिहेव करता है, कौन सा वाला ज्यादा खराब इंसल्ट है? कौन सी लगने वाली ज्यादा बात है? यस, व्हाट डू यू थिंक? मुलाला मुलीसारखं म्हणणं हे जास्त Sissy, लागण्यासारखं. sissy is more hurting. A tomboy, it's okay. Girls will, with their growing age, they will overcome this behavior. And once she is married, everything will be smooth and fine. But that does not happen with boys. So boys feel this a very, very insulting thing, and then they start behaving in a more violent way, even if that is hurting themselves. So they will try to prove I'm not a sissy. And that is how men's behavior is tutored from very young age. Similarly, when someone, a man is called, he is being a dick, that is, he's being very rude, mean. These terms are not good terms, and I'm sorry for using these terms also. And when you say he's being sissy, he is being timid, effeminate, he will not like, he will prefer being called a dick than being called a sissy. And then think of Hindi, Marathi, all the insults, shivya, bastard, son of a bitch, haramzada, and there are many, many more worse things bring to your mind from your languages. Almost the most insulting shivya of what are shivya called in Hindi? हिंदी में क्या कहते हैं? गाली. गाली, yes, sorry, गाली. तब हमारी गालियां माँ या बहन के ऊपर होती है. So why two men are fighting, two boys are fighting on the ground because of something which has nothing to do with the mother or the sister or the daughter, but then all the galiya, shivya pertain to mother and sister. Why? So she becomes the battleground for the man. Her body becomes the battleground for man. So pride of someone and insult of someone, she has to bear all these things. Surprisingly, I have heard that in Assamese there is no swear word referring to mother. So that is the only language that's what I have heard of. If there are someone from Assam here or someone from nearby places, maybe even Northeast, if you can throw light on this. If this is true, then I should salute these people. They have no swear words for referring to mother or sister here. And all other languages, we have so much of them. And even with the rule that these are the words which shouldn't be said, they are uttered so commonly, openly. These are some examples from Bengali. Ramoni, that is woman, it comes from the root word Ramon, which is enjoyment. An adjective form of this root word is Ramon, which is Ramonia, idyllic. Now, if you have a word like this, so woman, the word for woman, if it comes from enjoyment, then don't you think that these things must be impacting us? They must have an influence on our thinking, cognitive abilities. Or the word getting married, if a man is saying this, or if it is being said about a man and if it is being said about a woman, if these have two different ways of saying, then isn't it impacting our cognitive abilities, thinking? Do marriage, that is how it is said for men, be a kora, and females would get married, be a हुआ. लग्न झालं, लग्न होणार, शादी होगी, and if it is a man, लग्न करणार. So it comes again to the question of agency. There is a proverb in Bengali, a lucky man's wife dies and an unlucky man's cow dies. हिंदी में क्या कहेंगे? जो नसीबवान है उसकी पत्नी की मृत्यु होगी और जो नसीबवान नहीं है उसकी गाय की मौत होगी. नशीबवान माणसाची बायको मरती आणि नशीबवान नाही त्या माणसाची गाय मरते.
Comment on this. What do you feel about Very it? very horrible. Horrible, no? Yeah. So if men feel this, what women must be feeling? So, female participants, what do you think about this proverb? Insulting? More than insulting. But then this is not, Bengali is not the only language. There are others. So will someone read this thing? And these things are common to most of the languages. I have given some examples. Please, someone. Roll number 38. हाँ मैडम बोलिए. Yes madam. Yes. Just read this out. Yes madam. Aloud. So that everyone can hear. Kannada, woman's intellect lies below the knee. A woman is like a tumor in the family, root of all conflicts. 3 women alone can make the noise of 100 men. Assamese, stone keeps a knife in good form and beating keeps a woman in good form. Punjabi, if the wife dies, it is a blow on the ankle. If the husband dies, it is a blow on the head. Good enough? आता असेच मराठी मधले बघा, हिंदी मधले बघा. आणि ह्याच्यावर आणखीन एक प्रकार आहे, और एक चीज होती है, जोक्स जो होते वाइफ पर, वुमेन पर. हंसते हैं सब, विमेन भी हंसते हैं. और जो शोज चलते हैं हमारे रियलिटी शोज और कॉमेडी शोज, उसमें तो काफी होते हैं. Now what we are doing here, this is not just for entertainment. These are parts from different ways of study, and not just from linguistics. This is being studied in a multidisciplinary manner. It is done in applied linguistics. It's also done in linguistic anthropology, conversational analysis, cultural studies, feminist media studies, feminist psychology, gender studies, interactional sociolinguistics, linguistics, mediated stylistics, sociolinguistics, feminist language reform, and media studies. So all these branches of knowledge, they are investigating how gender, language, power, they come together, and plus there is cultural studies also, because all these things, even if we are looking at language, from where do these terms come? They come from culture. So all these things are investigating this interrelated connections of language, gender, and invariably raising questions of power also. So you may take up these questions. I have just scraped the surface. There is actually you can go deep down a lot, and you can adopt any of these perspectives. Maybe you want to do it from gender studies perspective, you want to do it from mediated stylistics perspective, or from media studies. Look at the media, how do they use these terms. Of course, what I'm saying about gender is also true about disability studies. It is also true about caste and class distinctions and hierarchies. So all these things come together. It is a truly intersectional kind of a field. And you can adopt any of these perspectives, theories from any of these perspectives, and start investigating such forms in your language and other related languages. Or you can compare what's happening between two different languages. For example, Hindi and Marathi. To what extent they are similar in this perspective, to what extent they are different from each other. So these things give rise to many number of research questions. If you want to do research later on, or if you want to guide your students, all these things can be done. Now, what are these areas? And the rest of the talk, I've given examples. This was the lighter part of the lecture. Now I'm going to come to the theories and the different perspectives which are taken here. The varieties of speech associated with a particular gender, these are being studied the way we started with. So do women speak differently? Think of your grandmother. That time, if it was a well-to-do family, they had madli kholi. That was a term which was used in those days. Mazgar. In Hindi, what was the word used? If someone can help me. So there was always a room in the house where women used to frequent. After the lunch was over, for some time, they got some time to relax and talk. Or they went to wash the clothes at the well or a river or maybe a stream.
and there women came together, and when they used to talk with each other, they used to use some different kind of terminology and different expressions. So there is research going on this. The social norms and conventions that reproduce gendered language use. So what are the things which keep on sustaining this language forms? The language forms, like we don't have a word for suhagan in with masculine gender. So why does there are the times are changing, conventions are changing, but language conventions and norms don't keep on changing. Why do we keep on reproducing the same forms? So that is also being investigated. Ways language can produce and maintain sexism and gender bias. It's not just that there is these things are there in culture, and that's why they get reflected in language. It's not just one-sided relationship. Language also keeps on maintaining this sexism and gender biases. The contextually specific and locally situated ways in which gender is constructed and operationalized. So the context may be in Kolhapur could be different from what's happening in Aurangabad, or if it is Kannada, what's happening in Bangalore, or maybe some specific locality in Bangalore and other areas in Bangalore. This may be different. So these things are not just culture means the whole of culture of Maharashtra or culture of India. It's not operating at such a general level. It is operating in small pockets with nuances, and these nuances need to be studied. A variety of speech or sociolect associated with a particular gender, which is sometimes called a genderlect. So just like you have sociolect, you have dialect, you also have a genderlect, and there is much research available on this. And I'll suggest some books also at the end. How language affects the gender binary in society. Of course, what we discussed, it was part of this last part with some things from earlier sections also. So these are at least few areas which immediately come to our mind, and each of this can be investigated from each dialect's perspective, each language's perspective. Or if you're lucky enough and if you stay at a place where there are many languages, if you stay in a border place, then you are a millionaire and you have much data at your disposal. So how all this research started? It started with one book, Language and Woman's Place. Because it was first, it was discussed a lot, and we are also going to discuss about this book at length. But it was soon followed by other people. It was Robin Lakoff who brought out this book in 1975. But after her, there were scholars like Deborah Tannen, Penelope Eckert, Janet Holmes, Mary Buchholz, Kira Hall, Deborah Cameron. And important books are Jen Sunderland, Language and Gender. It came in 1995. And even more important are Hall and Buchholz, Gender Articulated, Language and the Socially Constructed Self. How is our self constructed socially through language? That is, and our self is of course gendered self. So that is one important book that also came out in 1995. So these last two books, if you want to start this study, you can begin with this, and these books will of course start their discussion with Lakoff's book. So let's look at how this study started in 70s and 80s. They started talking about this was a time when women's liberation movement was making progress, and it was often the women from the same liberation movement thinking on these lines also. So they were trying to discover if there is some kind of a link between language, the way we use language, and the asymmetries that we find in the society. So that is how they started this study. And the first progress that was made was the Lakoff's books, where she came up with this deficiency model. So what she did was, they started noticing that men talk in a standard manner, or what we call more than standard. The relevant term would be default. This is the normal way, default manner, and whatever is abnormal is defined abnormal with reference to the default model. So default is, this is invariably the regular thing, and if you find some difference, then it is to be defined with reference to the center. So default mode is like the center governing the structure. So men's language practices are the normal thing, and then there are some differences which are observed in women.
some things which are done regularly by the upper caste men, and if there is some difference, then this is done by people at the borders, the lower caste and whatever it is. So this is how it works with gender also. So Robin Lakoff, she identified a woman's register. You know what is register in linguistics? You have a journalistic register, you have a legal register. According to what you are putting the language in use for, the language keeps on changing, and that is referred to as a register. So she said that there is also women's register, and this serves to maintain the inferior position of women. So she just said that it is maintaining women's position, but what was that position? It was invariably the inferior position in society. And she came up examples that she gave were uh, women tend to use more tag questions, question intonation, and weak directives. So this was her finding. So women tend to use this form to a greater extent than men do. Men also use tag questions, but then they are using it for different purposes. And women are using intonation questions more and weak directives. Weak directives is go out, get out. This is not how women in power will use language. They are giving weak kind of order or directive. That is what she found. So this was the first time that she recognized that there is some gendered difference in language also. And then people started researching, and but major work was already done by her. And if because this was the first work, there was a lot of criticism of this work done, not just by men, also by women, also by other linguists, also by other sociolinguists. So this was a highly discussed model which has come to us so far. But we must say that this was the first point because of which people started noticing this. Even if it may have some fault, at least the beginning was done. So this was called a deficit model because it found that there are certain things which men have in their language which lack in the language used by women, and that's why it is called it lacks something, so it is deficit. So it defines the adult male language as a standard and women's language as deficient, and this itself triggered criticism. So who would criticize this? Of course, women criticize this. That how can you say that women's language lacks something? How can you say that this is it is deficient? How women's language reveal their place in society? This is what she did through her examples. We will look at some of these examples in some time. So they women are seen as inferior, and women are used to this role, and that's why the language has got used to accommodating different positions or not hurting others. So even if a woman is in power, she will tend to use language in such a way that she will avoid head-to-head collision. She will try to take everyone together, and that's why her language lacks certain things which a man, if he was in that position, would have used. So that is what she pointed out. This women's language is called the deficit model because you're trying to judge it according to the criteria of men. So whole of this theory is centered around men's language. It keeps men's language as a standard, and women's language is being judged with reference to men's language. So सॉरी बहुत देर तक मैंने इंग्लिश में बात की. तो ये लैक ऑफ क्या कह रही है कि स्त्रियां जब बात करते हैं तो पुरुषों जैसा पावर का यूज नहीं करते, उनके लैंग्वेज में वो पावर टर्म्स लैकिंग, और इसीलिए तुमको तुम्हारा व्हाट्सएप पे डालूंगी सब, तो उसकी मेरे को प्रिंट वो योगेश देता हूँ योगेश कर. तुम्हारा नंबर क्या? नितिन का नंबर है क्या? नहीं क्या? I'll give some examples here. Look at the last point of this slide. Hedges, tag questions, polite form. महिलाएं ये सब ज्यादा यूज करते हैं. तो क्या हेजेस मतलब क्या है, इसके लिए मैंने थोड़े एग्जांपल्स दिए क्योंकि सब लोग इंग्लिश के नहीं है बैकग्राउंड के, इसलिए ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा. So let's suppose one woman says, I think why we might want to consider different approach, maybe two women are talking to each other. दो महिलाएं एक साथ एक दूसरे से बात करें.
तो हो सकता है हम दूसरा कुछ अप्रोच ट्राई करके देखें, हाँ. And the second woman says that sounds reasonable, sort of. So how are they using this language? According to Lakoff, two men, when they are talking, they will not use language like this. So perhaps a man will say, let's use something else. He will not say, I think, maybe. These are hedges. It sounds like she does not have confidence. I think, maybe, sort of, it seems. These terms are found to a greater extent in women's language, not to the same extent in men's language. These hedges soften the directness. किसी को डायरेक्ट कहना नहीं नहीं, ये आप जो सॉल्यूशन ले आए हो ये ठीक नहीं, मुझे नहीं ठीक लग रहा है, चेंज करो. Lakoff is saying that if you have a female boss, most probably she will not say like this. और कुछ ट्राई करके देखते हैं, ऐसा कहेगी. तो ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनको डायरेक्ट कोलिजन नहीं चाहिए. डायरेक्ट कुछ आपने अच्छा नहीं है ऐसे कह दिया तो आप पूरी टीम को साथ में ले जा सकते हैं. Women's way of approaching teamwork is different and men's way of approaching the teamwork is different, and that's why these things are happening. So when woman says that ऐसा करके देखते हैं या और कुछ ट्राई करके देखते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा, तो डिस्कशन आप इनकरेज करते हैं. बल्कि ऐसे नहीं कि मैं बॉस हूं तो मैं बताऊंगी और ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा उसका अप्रोच नहीं होता है. ऐसे उनकी लैंग्वेज से दिखाई पड़ता है. दिस वाज व्हाट शी सेड. Similarly, she pointed that tag questions are used more by women. You're coming to the meeting, aren't you? और फिर दूसरा कलीग कहता है, yes, I'll be there. तो इससे क्या है? लैकऑफ के अनुसार वो श्योर नहीं है या फिर हमेशा पुरुषों से क्या मराठीमध्ये म्हणतात की दुजोरा पाहिजे तिला. शी वॉन्ट्स इट टू बी reiterated by men. She wants support from some people around her. That is how she sounds. Actually, that is not what she's trying to do. She's just taking everyone with her. But what it comes off to men, पुरुषों को लगता है हाँ मुझे इंपॉर्टेंस मिल रहा है और ये नहीं डिसाइड कर पा रही है, मैं डिसाइड करने वाला. She wants me to be at the meeting. I am going to supply something very important in the meeting, and that's why she's making sure that I'll be there. All right, so this is how men and women think differently and they use language differently. Polite forms भी women ज्यादा use करते हैं. Would you mind if I asked a question? एक महिला ऐसे नहीं गिर गया, अच्छा एक बात बताइए, ऐसा नहीं शुरू करेगी. और एक बात मैं पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो इससे आदमी ऐसा नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा. ऐसे उसका कहना है. रिसर्च से उसको जो पता चला ये क्या है. दूसरों ने कहा है कि ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है. ओके, एम आई मेकिंग माई पॉइंट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस डेफिशिएंट मॉडल? So what is deficient here? Some women may say, I'm talking about the female participants here. You may say actually this is women's language is not deficient. It has more of polite forms. It has more of understanding others. It has more of empathy. So it is not deficient. Actually it is in more of excess than men's language, and it is good for teamwork. But that was what Lakoff said at that time. And why is she saying this? Because she is judging all these things, keeping men's language at the center, because that was the norm at the time. Let's go ahead. So when you think of all these things together, you will understand that actually you cannot think of only women and language without reference to culture possible. It's not going to become possible. We need to look at what is being taught to men, what is being taught to women, the kind of family setup in which they are brought up, what values are taught to them. Are they being taught different kinds of values and ways of interacting with each other? So you cannot just study workplace and make some statement and say that, okay, men and women are genetically different and that's why they are talking differently. And genetics has to do something, genetic from gender point of view has to do something with the language forms that are used in
at the workplace. This will be absurd. You need to look at many different things. As a digression, I will like to point out, maybe you have your kids or someone young in schools and preschool years. There is a song, a lullaby, Chubby Chicks, which is taught in almost all preschools. Have you heard of this? Yes, am I audible? Ma'am, you're audible, ma'am. Have you heard of this Chubby Chicks song? Yes, that's a poem taught in preschool. Preschools, yes. Do you know the lines? Heart, chubby cheeks, dimple chin, eyes are blue, lovely too, very fair. Very fair. And then teacher's pet, is that you? Yes. So what are we teaching through this song? To whom does this song do these lines refer to? Chubby cheeks, dimple chin. Ma'am, will you please repeat those lines? Teeth within, blue eyes, very fair. These are the adjectives. We are teaching this song in India. White people. Yeah, pardon? White people, racial. Yeah, racial. It comes from England, and even in England, blue eyes, very fair child with chubby cheeks, very beautiful looking. And then, if you are like this, then you are the pet of your teacher. So if you do not fit this beauty standard, if your eyes are not blue, if you are not fair, and if you are not chubby and everything, if you are very thin, if you are dark skinned, if you have brown eyes or if you have black eyes, then you do not fit into this standard, and teacher is not going to like you, no one is going to like you. So what kind of beauty standards and what kind of upbringing are we giving our children? So I wonder why even today we got independence how many years back now, and still we are teaching this kind of a colonized, coming from colonized mentality rhyme in our schools. Now, if you know Uncle P, have you heard of this Uncle P? At least those with Marathi backgrounds, participants will recollect this Uncle P, which was used in Marathi medium schools. Perhaps you have a similar thing for Hindi medium schools also, which this is not a textbook. This is something optional, and it is teaching you a, e, barakadi, and numbers. And you have these texts where you have Baban ye, Khaila Bais, Kamal, Saipakkar, Kamal, Tatwar. Chitra, Balmitra. Yeah, the Balmitra and all these Uncle P's. You have different Uncle P's. What do these teach? They want to teach you language. They want to teach you numbers. But with that, they are also teaching values. And without understanding, realize they are not doing this purposefully. Whoever the writers, long back, maybe 60, 70 years, 100 years back, someone wrote them. And maybe they did not have this intention. But what are they teaching? I don't have those pieces here. Otherwise, I intended to show them, but sorry, I cannot. But I'll share these things in your group or with your leader, and they will share on your group. So you'll find that men are being taught you should be taken care of. Girls are taught what is the age of the pictures that are shown there. Girls of 6-7 years age, they are working, they are cleaning garden, they are cleaning house, they are asked to serve food to their brothers. So what are we teaching them? Once you are being brought up in this kind of a setup, boys with a different mentality, girls with a different mentality, and then suddenly you say that women speak differently and men speak differently. Do you agree with this research that I told you just now? Lakoff's research. Men speak differently, women speak differently. Yes, that is true. But calling it deficient model,
can this thing be just wound up by saying that there is invariably a difference in the way women think, the men use language and women use language without reference to our culture, without reference to our um, bringing up of children, without reference to our caste structure, class structure, gender differences, injustices in society, the kind of gendered labor that we have, what children see in their houses, the kind of power uh, enjoyed by father and lacked by mother. So how can we separate these things and suddenly come up with this conclusion that yes, women have deficient language? So while earlier studies like Lakoff suggested a clear gender divide, later analysis started looking at different nuances. They started realizing that things cannot be separated in such manner, and we need to look at many different things like elements such as group size, communication setting, where this is communication is happening, the familiarity between speakers. Are you used to each other? How good do you know each other? Now there is a very curious study done by Janet Holmes. She was studying industrial areas or not heavy industries where you have workers working together throughout the day, and often where you have mixed kind of setup, men and women are working together, and she found that most productive groups were those who had who use small talk to a very large extent with each other. So you have a male worker and a female worker working together, and they have small talk. Like they are not talking about the things to be done at the job, but they talk about family matters and trivial things to a large extent with each other. Even if their language backgrounds are different, the greater small talk they use, she found that their work was better. So what language you are using and what you are the kind of work you are putting throughout the day and the company is gaining from that was found to be surprisingly correlated with each other. Most companies tend to think that if workers keep on talking to each other, the work will suffer, less work will be done. And her finding was that greater work was being done because they were enjoying. They had light kind of atmosphere at the workplace, because of which greater work happened being done. So you need to look at these things also, how well they are adjusted with each other. This also needs to be looked at. At many workplaces, men are not very happy when they have a female boss, or when there are women in the group. The politics within the group changes. So this also has an influence on the kind of language that is used. So it is important to note that men also keep on using similar kind of things. And of course, this was done later on. Some research is done that men also use hedges. They also use tag questions, but their purpose is very different. Women also use this hedges, but when she is in more control, she is the boss. She uses it differently. Now think of a situation. Think of the biggest female academician that you have in your mind, from your subject, from your place, from your university, from your department, whoever it is. Bring that woman to your mind and think she is conducting a meeting, or maybe she is addressing some seminar. The kind of language she will use. She has a different relationship with other academicians, and in that particular setting, she is invariably thought of as the best academician. She is more powerful there. So she does not have the need to use these hedges and tag questions. And naturally, her language is going to sound different. So many things depend on the kind of power politics that is happening in the workplace there. So whatever about workplace it is, if it is home, it's going to be different. If it is a small cottage industry, it is going to be different. If it is university, it's going to be different. But at every workplace, the kind of power relationships between these people is going to decide the language. Even sometimes, maybe more than gender, this power relation is going to be a more powerful aspect. So in a professional meeting, women might strategically use hedging to navigate complex power dynamics. But when will this happen? If she is not very powerful,
If she feels that there can be trouble, she may not get cooperation from her male colleagues, then she will tend to use this. But if she knows that I am the boss and everyone is going to listen to me, then she may not feel the need to use all these things. All right. So, do you need a break now, or should I continue? Yes, Organizers, madam. So 10-15 minutes break can be given. Yes. all right. So, what time should I be back? Let me know, and you can have a break now. Yeah, by 12:35. Is it fine? 12:35. All right, fine. You have 10 minutes then. Okay.
So is everyone here? Can we start? Yes, madam. Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Yeah. So what I was saying is that if we look at these three aspects, language, gender, and power, it's not just that three things can be studied in isolation with other things. There are other things like the family background, uh, childhood bringing up, and all these things are also going to influence. So language is not just a tool of communication. So it cannot be said that it reflects just one thing. The power structures which are inherent in the other social structures are going to influence the way language and gender interact with each other. So what Lakoff had started, it went ahead. There have been other models which have come up. So we are going to look at some of these models. It's not possible to discuss all the models, but two especially important models I'm going to discuss here. And then we are going to look at the kind of aspects which they have taken up, and the research which has gone ahead on these aspects, and what we know about interaction at this juncture in time. So the next important model is the dual cultures and dominance approach. So this dual culture looks at these two men's language and women's language. These are seen as two different cultures. They are both different, and they belong to two different subcultures, and these two subcultures have arisen because they have been socialized differently. So from childhood, the way they have been brought up, this has created some differences. So effect of looking at these two as two different cultures, this was actually done by Deborah Tannen, and she says that they tend to use a report style, and women tend to use a rapport style. So report is they are more focused on the details and factual details. In a documentary kind of a style, they are just reporting the things, and women are more into connecting with each other, not just women, with other group members also, and they want to establish a rapport with everyone. So they are more keen on establishing and maintaining relationships, and men are more focused on factual information. Now, with these are two different cultures, two subcultures, if we can call them so. And in these two subcultures, there is always a factor of dominance. So women are seen as a subordinate group, and their language is the language of that subculture is dominated by male supremacy and patriarchy, because that is the dominating culture throughout. So it's not just the workplace, or it is not just the home where who is powerful becomes important, but overall outside also it is male supremacy and patriarchy. And that's why this particular subculture, that is a woman subculture, is seen as the subordinate group. So language is male centered. It is primarily male centered, and patterns of language reflect the power balance, imbalance, whatever you call the power structures of the society. These get reflected in the interactions between the two subcultures. So this is the second model. So the first model was the deficiency model, which looked at male is the normal form, and this form male language, the attributes, the components, some of these things are lacking. There is some deficiency which is used in the speech by women. So there is some deficiency. This was the first model. Second was these are two different subcultures, and because the dominant patriarchy and men supremacy keeps this one of the subcultures dominated throughout, and that's why you find two different subcultures, which these two subcultures keep on sustaining the differences. Now, after this came up a very important model, which is currently the most popular model. This was done especially by West and Zimmerman. Now, this describes speech as not necessarily controlled only by gender, as a gender category, or not dominated only by gender dimension. There are multiple factors in interaction, as I said some time back before we stopped. So there are multiple factors, and
interaction happens through an impact under a dominance of many factors, and all these factors are going to have an impact on gendered language differences also. So Zimmerman and West, they called this the way we interact with each other, the way it is not just the gender and language, two things coming in play. We are interacting with each other under the influence of many factors. So whenever we talk, what we do is we are doing gender. This is how they describe what we are doing. So what I'm doing now, I'm not just explaining a topic to you, I'm doing gender. What you are doing now, listening to my lecture, you are doing gender. So this is how they describe it. So doing gender, what does that mean? The social constructs, which while affiliated with particular genders, can be utilized by speakers as they see fit. So according to my needs, I am in a dominant position now. According to my needs and taking help of all the social constructs, I may use some things, maybe from men's language, maybe from some other dimensions. According to my needs, I use different elements together. And through this, I am constructing my gender, my identity, and establishing group dynamics here. And I am trying to take control of this group dynamics. So also you are going to do this. So communication styles, whether it is my communication style or your communication style, it is not just an outcome of what is my gender and what is the power dynamics between you and me. It is also related with the complete context. It is not just my gender and your gender. Or if in this group there were only female participants and the speaker was also female, in that context, it may have a different dimension. But when we have people of different generations, different genders, and from different contexts coming together, we are creating a completely new context. And in that case, the kind of communication styles that will develop may not be directly related with single gender groups or power dynamics. So people keep on accommodating their language towards the style of others, the other people. I will try to take into account your styles, your way of functioning, your context, because you come from different places, bringing different contexts with you and power dynamics with you. You know certain things and you have been doing gender differently and I have been doing gender differently. So we try to accommodate ourselves with each other. So when you have a mixed gender group, gender differences are less pronounced. If you have single gender groups, if only men are talking with each other, gender differences are more pronounced. If women are talking with each other, there is no male there, then gender differences are more pronounced. When we are together, gender differences are less pronounced, and other things from the context, doing gender gets different dimensions, and context starts influencing more. So this accommodation towards language style is not only gender oriented. So examples that they take, like polite and emphatic speech, sometimes it is also used by men. So how is that? According to like of study, women should be using that. How is that? Or sometimes men are also using this, because in that particular context, any person, whether it is me or it is a male resource person, he will tend to take whatever fits that particular context, so that we can come together and work out that particular context successfully. So we will keep on using elements from each other's context also. So if this keeps on happening, then you cannot say that earlier research was completely wrong or it is not being observed in any manner here, because Lakoff may have observed only women talking to each other. She may have looked at context where women were less in number and only a few women were in a boss role, and that's why the gender dynamics was different there. So every context is different, and that's why you cannot say that only gender is going to influence the outcome. Earlier it was believed that power is something separate from language. Now it is no longer the case. People know, research has already established this, that language itself
It gives you power or it takes away power from you. So power is different and language is different. This does not happen. It is through language that we exert power or we become powerful or powerless. So it happens through language. Language is one of the important factors in retaining, in obtaining, maintaining power, and all those things. So, what is the general understanding today? Power is embedded in language structures. It is not coming from outside. It comes from within the language and the speech event that we are engaging in. The language of science helps to regulate the ideas of the dominant groups in it, which can never be completely neutral. So, those who are in power or those who dominate that particular speech event or that particular context, we cannot completely deny that power. We can never neutralize that power completely. We may negotiate with that power. We may come up with certain ways of neutralizing that power or lowering that power for that particular instance only for some time, but it may not happen. It may not sustain throughout. In psychology, the interpretation of gender had always some benefits for the academics who were writing about it. So it was always important who is using the language and how they're using it to explain something. So the more use we make of psychology, this understanding that yes, gender and power are related, because psychology had already done it. Look, think of Freud, the way he made the subject speak about themselves, his case studies. So you will understand that language has always remained central in studies in psychology. And the more influence of psychology we find today on analyzing these workplaces and the way language is used as a tool for gaining power, psychology has explanations of all these things and it has already handled these things. Gender is not something people are born with. So you are not born a woman, you become a woman, and all those things. We all know these things. So people learn to perform, and that's why the earlier phrase that I told, doing gender, this becomes important. So you are not just feminine gender, masculine gender. You are becoming that gender. You are doing that gender. Becoming is not just you're changing yourself, and it is done forever. So today I may have different combinations of masculine, feminine forms in my language, and in after 1 hour I have another lecture, I have another meeting, there the combinations may be different. So these things are in a flux, they are dynamic, they are constantly changing. This is not a fixed thing forever, always already there. It's not like that kind of a thing. Yes, मैडम anyone, any doubt? Yeah, please. हेलो Yeah, मैडम मैडम हिंदी में कुछ समझ रहे हैं हमारे को sorry, कुछ yes. कुछ Okay, okay, हाँ okay. So sorry, फिर I forgot about हाँ that. हम So, मराठी के 24 आदमी टीचर है सब okay, so Marathi, yeah, I forgot. When I started after the break, I forgot about that. Yeah, I हाँ will explain this. So, हिंदी मध्ये सांगितलं चालेल okay, ओके हमने क्या देखा था पहला, ये था डेफिशिएंसी मॉडल. डेफिशिएंसी मॉडल में क्या देखा जाता था कि पुरुषों की लैंग्वेज है, उसमें से सब कुछ फीमेल की लैंग्वेज में होता है. ऐसे नहीं, फीमेल जब यूज करते हैं तो उसमें कुछ लैकिंग है, इसलिए उन्होंने वो डेफिशिएंसी मॉडल ही नाम दिया कि फीमेल दूसरी तरीके से बात करते हैं, उसमें उतना पावर नहीं है. ज्यादा पावर पुरुषों की लैंग्वेज में है और वो यूज करना जानते हैं, उनको उसकी आदत है. और महिलाएं क्या करती है कि सबको साथ में ले जाने का ज्यादा कोशिश करती है. खुद की अकेले की पावर दिखाना इतना उनके लैंग्वेज में वो एस्पेक्ट नहीं होता है. ये डेफिशिएंसी मॉडल में आया. उसके बाद जो हमने देखा ड्यूअल कल्चर का, कि लैक ऑफ का मॉडल सब लोगों को पसंद नहीं आया. तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसमें लैकिंग है, या वो कॉपी नहीं कर सकती. क्यों कॉपी नहीं कर सकती? वो तो मॉडल है, हजारों साल से पुरुषों को ये सब करते हुए देखा तो है, उनकी लैंग्वेज सुनी थी, तो ये भी कॉपी कर सकती है. लेकिन कॉपी करना इतनी बात नहीं है, या इसमें नहीं है और बाहर जो नहीं है वो ऐड कर दो, खत्म हो गया बात, ऐसी भी नहीं है. तो दो अलग अलग सब कल्चर ही है. एक कल्चर है, दोनों के जैसे कि दो ग्रुप्स है, उनमें कुछ फर्क ही है, अलग अलग फर्क ही है. वो कहाँ से फर्क आते हैं? क्योंकि उनका जो चाइल्डहुड है, सोशलाइजिंग जो है, उनको बड़ा कैसे किया है, क्या सिखा के, क्या दिखा के, क्या सुना के, कैसी फिल्म्स देखी है, कैसे गाने सुने, किसको क्या करते हुए देखा है, उनको वैल्यूज क्या सिखा है, इस सबसे उनके उनके दिमाग पे ये सब हावी है बातें पुरुषों के और
महिलाओं के। इसलिए वो दोनों अलग कल्चर है, दो अलग कल्चर है। जैसे कि दो कंट्रीज है, एक अमेरिकन ग्रुप है और एक इंडियंस है, जैसे उनके कल्चर में फर्क है वैसे मेन और वुमेन के कल्चर में फर्क है। उनका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल अलग है। वो कहाँ से आया है, अलग अलग क्यों आया है? क्योंकि पुरुषों के स्टाइल जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, फैक्चुअल थिंग्स बताना, मतलब रिपोर्टिंग स्टाइल। जैसे कि आपने अगर एक डॉक्यूमेंट्री देखी तो डॉक्यूमेंट्री है ज्यादा पुरुषों के स्टाइल की जैसी है। और अगर आपने एक फीचर फिल्म बनाई है जिसमें इमोशनल कंटेंट है, सॉन्ग्स है, वगैरह वगैरह सब बाकी सब है, तो वो फीमेल स्टाइल जैसी है। तो उन्होंने दो नाम दिए, पुरुषों के स्टाइल को रिपोर्ट स्टाइल कहा और फीमेल के स्टाइल को रैपो स्टाइल, सबको साथ में ले जाना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ऐसा बताया। और ये भी कहा कि पूरी सोसाइटी में कौन सा सब कल्चर को इम्पोर्टेंस ज्यादा है? पैट्रियार्की। पैट्रियार्की किसको फेवर करती है? पुरुषों को करती है। तो ये पुरुषों की जो स्टाइल है वो हमेशा के लिए थोड़ी सुप्रीमेसी तो दिखाती रहेगी। सुप्रीमेसी उसमें हो या नहीं हो, लेकिन वो हावी ज्यादा रहेगी। इसलिए डोमिनेट कौन सी स्टाइल करती है? पुरुषों की स्टाइल करती है। तो दो अलग अलग स्टाइल्स है और वो स्टाइल्स में पुरुषों की स्टाइल ये ज्यादा महिलाओं को सबऑर्डिनेट करने की कोशिश हमेशा करती रहती है। ये दूसरा मॉडल है। उसके बाद जो आजकल का जो पॉपुलर मॉडल है वो डायनामिक या सोशल जिसको मॉडल कहते हैं, वो कहते हैं कि बचपन से हमें अलग अलग तरीके से हम बड़े हुए हैं, अलग अलग बातें इनकॉर्पोरेट किए, लेकिन ये हमेशा वैसी ही रहेगी ऐसी नहीं है। कौन से स्थान पे किसके साथ हम बात करें, वहां हमारे हाथ में कितनी पावर है, हमारे साथ में कौन से लोग हैं, उनके साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे है, ये इन सब बातों का हमारे स्टाइल पे प्रभाव पड़ता है। हम क्या भाषा यूज करते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। और जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं आपकी कुछ लूंगी और किसी की कुछ स्टाइल लूंगी और मेरा काम मैं बनाऊंगी। तो इस पर ज्यादा जेंडर का प्रभाव है और वो फिक्स्ड ही है ऐसा नहीं रहता है। जरूरत के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। तो जेंडर करना ये सही बात है, डूइंग जेंडर तो ये है ही, लेकिन वो ऐसा ही रहेगा ऐसे नहीं है। जेंडर का यूज जो होता है, डूइंग जेंडर जो होता है, वो एक फ्लूइड डायनामिक है, हमेशा चेंजिंग रहता है, फिक्स्ड है। ऐसा है आज है और 10 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा ऐसा नहीं है। लेकिन जो डोमिनेंट पावर्स होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि अपर कास्ट लोग हैं, पुरुषों की मतलब पैट्रियार्की है, उनकी सिस्टम है, या कैपिटलिज्म है, तो वो हमेशा जिनको उन्होंने हमेशा के लिए सबऑर्डिनेट बनाए रहता है, तो उनका पावर थोड़ा तो रहेगा ही, कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होता। ओके, इतनी बातें समझ में आई? तो जेंडर हम जैसे जेंडर लेके नहीं जन्म लेते। वी आर born with some sex but we are not born with gender is taught to us। जो सिमन दे बोआ ने बात कही थी और बाकी के बाकी बहुत सारे फेमिनिस्ट ने आगे इस पर बहुत कुछ कहा है। तो जेंडर तो हम सीखते हैं और जन्म उसी में लिया है और वैसे ही कांस्टेंट रहता है, ऐसी बात वो नहीं है, वो चेंज होती रहती है। उसमें क्या क्या प्रभाव उस पर पड़ता है, सोसाइटी का तो प्रभाव पड़ता ही, हमारा बचपन कैसा रहा है और आज हम कितने पावरफुल है कम है, ये इन सब बातों का रहता ही है। लेकिन उसके साथ फिजियोलॉजी, हार्मोन, इन सब के अनुसार वो फिक्स्ड है, वैसा ही रहेगा ऐसा नहीं होता है। इसमें बदलाव आते जाते रहते हैं। अब ये कुछ रिसर्च के जिसमें दिखा है कौन से एस्पेक्ट लिए और उन एस्पेक्ट्स में से क्या फर्क दिखाई पड़े, ऐसे कुछ एक 6-7 हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा फर्क जो दिखाई पड़ता है पुरुषों में और स्त्रियों की बात करने में, यस पठान, मिस्टर पठान, यस व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यू हैव रेज्ड हैंड, डाउट? नो डाउट? ओके, No, madam. By mistaken, all right. this एक फर्क हमेशा दिखाई पड़ता है कि पुरुष बहुत कम बात करते हैं, महिलाएं बहुत ज्यादा बातें करती है, ऐसे हमेशा ही कहा जाता है। और हमने जो प्रोव्स देखे उसमें भी वही था कि 3 भी महिलाएं हैं तो वो 100 आदमी जितना शोर मचाती है।
तो इसका रीजन क्या होगा? जो रिसर्च हुआ उसमें, जिमरमन और वेस्ट ने एक जो स्टडी किया उसमें उन्होंने देखा कि अगर आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी ये लेक्चर है और हम ऑनलाइन है इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम आमने सामने होते तो मैं जब बात करती रहती हूँ तो आप उसमें से अच्छा, ये यस ऐसे कुछ करते, रिस्पॉन्स देते रहते। ये अगर रिस्पॉन्स आता रहता है तो मुझे समझ में आता है कि आप मेरे साथ है, सुन रहे हैं, और कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है। तो जिस तरह का हम ये पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स यूज करते हैं, मतलब वगैरह जो है, ये जो साउंड्स निकालते हैं, इन पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का यूज पुरुष और महिलाएं अलग अलग तरीके से करते हैं। पुरुष पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स ज्यादा यूज नहीं करते, स्त्रियां ज्यादा यूज करती हैं। और इसके कारण से हो सकता है कि कुछ हमारे दिमाग में बैठ गए कि हाँ, पुरुष ज्यादा बात करते नहीं है, महिलाएं करती है। दो अगर महिलाएं फ्रेंड्स दो अगर बात कर रहे हैं, तो जो बात कर रही है, वो जो कुछ बता रही है, तो दूसरी महिला उसमें हाँ हाँ वगैरह ऐसे ऐसे साउंड्स बहुत ज्यादा यूज करती है और उसको बात करने के लिए आगे मोटिवेट करती रहती है। वो उनका सिर्फ पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स से भी इंटरेक्शन होता रहता है। इतना वाला पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स का यूज मैन नहीं करते। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस पाया गया है। सेकेंड डिफरेंस पाया गया है कि क्वेश्चंस कितने यूज करते हैं। पुरुष क्वेश्चंस का उनके दिमाग में एक होता है कि क्वेश्चन का रीजन क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। क्वेश्चन पूछा है मतलब मुझे अ, उसका रिप्लाई देना है और एक इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन देनी है। महिलाओं के दिमाग में ये नहीं है। ज्यादा तौर पर उनको क्वेश्चन मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन पाने के लिए क्वेश्चन नहीं है, वो रेटोरिकल, मतलब जिसका आंसर मुझे पता है। जैसे रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं कि इजंट इट वेरी हॉट टुडे, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गिव अ वेदर रिपोर्ट टू मी नाउ, so I just want, yes, yes, you agree with me, so I know the answer, you know the answer, and you know that this question is not actually a question, it is just a means of communication, so that we can keep the communication line open. So it is a way of collaborating with each other. So this collaborative जो यूज है क्वेश्चन का, वो फीमेल्स ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है और सामने के पुरुष को पता नहीं चला है, ये स्टाइल ही पता नहीं है, तो क्या होता है, उसको लगता है कि मुझे क्वेश्चन पूछा है, मैं आंसर दूंगा, और वो एक इंफॉर्मेटिव कुछ नई इंफॉर्मेशन वाला आंसर बताएगा जो उस पूछने वाले को एक्सपेक्टेड नहीं है। तो उससे क्या होता है, बहुत बार सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। So women are not expecting at that moment to change the subject, and this never happens when two women are talking with each other. They know what is the purpose of this question. And this is not understood by men. Similarly, tag questions भी use करते हैं differently. ये जो स्टडी है वो लेकॉफ के से इसमें आया है, लेकिन लेकॉफ ने क्या कहा था कि इनमें दोनों में ये बहुत ज्यादा ये परमानेंट जैसा फर्क है, और उसमें कुछ गिव एंड टेक नहीं है। ये आगे के रिसर्च ने क्या दिखाया, हाँ ये होते हैं, मेन भी इसका यूज करते हैं, विमेन भी यूज करते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए ऐसा ही होता रहेगा। कभी कभी एक हाथ पुरुष, महिलाओं की अंडरस्टैंडिंग जिसको अच्छी है, वो अलग वे से ये कर सकता है, या कोई महिला भी पुरुष के दिमाग में क्या है ये समझ के या उसके जैसा वो भी यूज कर सकती है। So we can keep on changing and we keep on taking these devices from each other. This was pointed out by the later research. So what happens with tag questions? Tag question मतलब क्या है कि जो लास्ट में हम स्टेटमेंट है और उसके बाद में एक दो शब्द का क्वेश्चन आता है, उसको टैग क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में. So these are frequently used to verify or confirm information regularly. लेकिन स्त्रियों की भाषा में क्या होता है, they may also be used to avoid making strong statements. So if I feel that there is a lot of corruption today. So if there is a meeting going on and I say that there is a lot of corruption happening in our institute today, and once I have completed this sentence and at the end I feel that I'm sounding very harsh, मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है, हो सकता है सब लोग मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, ये बहुत हार्श और स्ट्रांग फील होगा, तो उसका टोन डाउन करने के लिए मैं लास्ट में एक टैग लगा दूंगी, डोंट यू फील सो, ऐसा, या फिर आपको नहीं लगता, ऐसे कुछ अर्थ का। तो इससे क्या होता है, टैग का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन आपको पूछा है, हाँ आप आपका डेटा दे तुरंत चालू करें, ऐसा नहीं है।
सिर्फ मैंने मेरा टोन थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए वो यूज किया है। ये इस तरह से पुरुष नहीं करते, उनको नहीं लगता है कि मुझे सॉफ्ट करना ही चाहिए, जो उनको कहना है वो कहा, बस हो गया। ये भी लेकिन विथ a pinch of salt, that all men do not do this, and it's not that all men keep on doing a similar manner and all women never do this. We keep on borrowing these things from each other. टर्न टेकिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। टर्न टेकिंग का कैसा होता है? फीमेल लिंग्विस्टिक बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिकली एनकम्पासेस अ डिजायर टू टेक टर्न्स। मतलब मैं कुछ कहूंगी, दूसरा जो फ्रेंड है वो कुछ कहेगी, या दूसरा कलीग कुछ कहेगा, टर्न्स लेने, एक ही बात करते रहना है, दूसरे ने कुछ कहना नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लॉन्गेस्ट चल रहा है तो जो सुन रहा है वो पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स से कुछ रिस्पॉन्स देता रहेगा, लेकिन वो टर्न टेकिंग जैसा ही होता है, थोड़ा बोला है लेकिन फिर भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें है। वो मेन में नहीं होती है, उनकी टेंडेंसी खुद पर सेंटर करने की ज्यादा होती है। ये सब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बस बस जो रिसर्च में देखा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता ही नहीं है कि दूसरे का कुछ सुनना है, या मुझे सुनना ही नहीं है, जाने दो भाड़ में, दूसरा क्या सोच रहा है वो जाने दो, ऐसा है, ऐसा नहीं है, लेकिन है थोड़े से कुछ फर्क है। सो व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विथ इम्प्लिसिट ऑफर्स, मतलब जैसे कि दो फीमेल फ्रेंड्स है वो बात कर रहे हैं, तो उनको अगर नए भी है फ्रेंड्स, नहीं है नए भी है, तो भी उनको पता है कि कॉन्वर्सेशनल टर्न्स लेने हैं, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स के थ्रू एटलीस्ट हमें एक दूसरे को हम सुन रहे हैं, या आई एग्री विथ यू, या आई एम्पथाइज विथ यू, ये दिखाना है। तो ये पुरुषों को अगर पता नहीं, उनको अंडरस्टैंडिंग उनमें उन्होंने कुछ एफर्ट्स लेके अगर नहीं डेवलप किए, तो वो होता क्या है, जहां मुझे लगता है कि यहाँ से मेरे कलीग, मेल कलीग से कुछ आना चाहिए, एटलीस्ट पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स में तो कुछ आना चाहिए, और मैं रुक रही हूँ कि उसका रिस्पॉन्स आने के लिए, तो वो उसको समझ में नहीं आता है, वो शांत हो जाता है, या फिर उसको सब्जेक्ट चेंज करता है, टर्न ही देता है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है, दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो जो हेजेस होते हैं स्त्रियां यूज करती है, क्या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, साइलेंट है, तो करना क्या है, यू नो इजंट इट, मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ आपसे, लेकिन वो आ नहीं रहा है, तो क्या होगा, दोनों के कम्युनिकेशन में गैप हो जाएंगे, दोनों के दिमाग में आएगा, पुरुष सोच रहा है कि ये शांत क्यों बैठी है, मुझे क्या करना है, मैं तो चुपचाप सुन रहा हूँ, और ये सोच रही है कि इसकी तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा है, वो एम्पैथी उसको नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। चेंजिंग द टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन, ये लास्ट वाले इसका ही एक कंटिन्यूएशन ही माना जा सकता है। अगर महिलाएं बोल रही है और या पुरुष बोल रहे हैं, तो उनके सब्जेक्ट, उनके इसमें सब्जेक्ट चेंज करने का प्रमाण कितना है, ये ब्रूस डॉर्वेल ने स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि पुरुष ज्यादा सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं, और ये एक रीजन भी पाया गया है कि जो अंडरस्टैंडिंग है कि महिलाएं बहुत ज्यादा बातें करती है, इसका रीजन उसमें शायद है कि महिलाएं जब बात करिए तो उसमें एक अलग तरह का कम्युनिकेशन होता है, अलग तरह की एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ती है, पुरुषों के बीच में कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो होती है। लेकिन जब मिक्स ग्रुप होता है तो वो कैसे करते हैं, टॉपिक कितनी बार चेंज करते हैं, इसका प्रमाण अलग है। लेकिन इससे भी हमें जो इंटरेस्टिंग बात पाई गई गुडविन की स्टडी में, कि सिर्फ जेंडर से नहीं टॉपिक चेंज होता है, वो जो बात कर रहा है उसका जेंडर क्या है और वो मैरिड है या नहीं है, इसके अनुसार भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जब टॉपिक चेंज करते हैं तो क्या होता है, women converse more about personal topics such as children, family, health. This social networking behavior was rarely found in conversations held by older men. Are you with me? जो इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए ज्यादा करके पूछ रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है? जब टॉपिक चेंज होते हैं तो विमेन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा आती है, फैमिली, चिल्ड्रन, हेल्थ, लाइट टॉपिक्स पे आती है, वो ज्यादा करके
पहले क्या हुआ है, पास्ट में कैसा हुआ है, एक दूसरे के बारे में क्या हमारी इंफॉर्मेशन है, वो शेयरिंग करना वो ज्यादा पसंद करती है। और मेन ज्यादा नंबर्स पर फोकस करते हैं। तो हो सकता है कि वो मनी से रिलेटेड नंबर्स हो, या स्पोर्ट्स का हो, स्कोर हो, कितने विकेट गए ये हो, वर्क प्लेस की रिलेटेड जो नंबर्स की बातें हो, ये ज्यादा यूज करते हैं। कुछ भी ना हो तो बस के नंबर हो, गाड़ी के नंबर हो, ये हो सकता है, लेकिन उनके दिमाग में ज्यादा नंबर शेयरिंग का उनमें ज्यादा यूज होता है जब मेन मेन का ही ग्रुप होता है। विमेन विमेन का ग्रुप है तो जो पर्सनल टॉपिक्स है, या पास्ट के बारे में है, या एक दूसरे के बारे में है, जो एब्सेंट लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में ही ये ज्यादा आते हैं। तो हो सकता है आप क्रिटिसाइज करेंगे कि ये तो जनरल व्यूज ही है, और ये प्रिजुडाइज्ड ही है। तो ऐसा नहीं है कि रिसर्चर्स हमेशा प्रिजुडाइज नहीं होते, ऐसा भी नहीं है। सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब खुद के बारे में बताना, कितना बताते हैं। ये रिसर्च किया है डेबोरा तानेन ने। तो उनको उसने पाया कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग बातें करती है। सेल्फ डिस्क्लोजर जब क्या करते हैं तो अलग अलग बात करने की उनकी टेंडेंसी होती है। विमेन ज्यादा करके सिंपैथी दिखाने की कोशिश करती है। जब कोई खुद के बारे में कुछ बताता है तो सिंपथाइज करने की तरफ उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। मेन की टेंडेंसी सेल्फ डिस्क्लोजर ना करने की होती है, और अगर सेल्फ डिस्क्लोजर किसी ने किया तो सिंपथाइज करने की जगह उनकी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि मुझे सोल्यूशन देना चाहिए, जैसे कि मुझे सोल्यूशन पूछने के लिए ही इन्होंने सेल्फ डिस्क्लोजर किया। कभी कभी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स वर्क प्लेस में भी आती है और मैरिड लाइफ में भी आती है, कि कभी कभी वाइफ ने कुछ बताया है, शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग अ सॉल्यूशन फ्रॉम हर हस्बैंड, शी इज जस्ट शेयरिंग द थिंग्स एंड शी इज जस्ट एक्सपेक्टिंग सिंपैथी, शी जस्ट वांट्स हर हस्बैंड टू अंडरस्टैंड her. That's all. But husband feels that if the problem is presented to me, it's just because she does not have a solution and I need to offer a solution. So I am the problem solver. I am capable of solving everything and she doesn't know. And then sometimes it can relate to misunderstandings and problems. So whether self-disclosure in adult friendship differs according to gender and marital status? हाँ, अगर वो उसकी शादी हुई है, वो औरत हो या आदमी हो, उसके अनुसार वो सेल्फ डिस्क्लोजर कितना करते ये भी अलग है, और उसमें क्या मदद करना चाहते, सिर्फ सिंपैथी ऑफर करते या सोल्यूशन देते, इसमें भी डिफरेंसेस है। So this is some data for men. 67 women and 53 men were asked about intimate and non-intimate self-disclosures to closest same-sex friends. Same-sex friend मतलब अगर हस्बैंड है तो एक दूसरे मेल फ्रेंड के साथ वो कितना सेल्फ डिस्क्लोजर करता है, और औरत है तो दूसरी फीमेल फ्रेंड के साथ कितना सेल्फ डिस्क्लोजर करती है। तो इसमें पाया गया कि जेंडर आइडेंटिटी के साथ ही, वो पुरुष है या महिला है, इस पर भी फर्क है, लेकिन वो शादीशुदा है या नहीं इसके अनुसार भी फर्क पाया गया है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ जेंडर से नहीं होता है ये सब, बाकी के सब फैक्टर्स भी आते हैं। बाकी के तो हमने बचपन से लेके देखे, साइकोलॉजी तो वही देखती है, बचपन में ही ज्यादा करके प्रॉब्लम्स रूटेड है ऐसे मानती है। लेकिन आज आपकी शादी हुई है नहीं है, इसके अनुसार भी आपका लैंग्वेज चेंज हो रही है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिर्फ वर्क प्लेस नहीं, बाकी के सब भी तो है लैंग्वेज के, तो उस पर ज्यादा एंड में अभी आते हैं। वर्बल एग्रेशन, लैंग्वेज तो सिर्फ हमें कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को पास में लाने के लिए हम यूज नहीं करते, कभी कभी लैंग्वेज तो एग्रेशन के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन एग्रेशन के भी तीन प्रकार है, एक इनडायरेक्ट एग्रेशन है, एक रिलेशनल एग्रेशन है, एक सोशल एग्रेशन है। तो इनडायरेक्ट एग्रेशन जो है, इनडायरेक्ट एग्रेशन जो है वो विक्टिम को इनडायरेक्ट वे से कुछ कहना, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर उसको कुछ उसके बारे में कहना, उसको एक्सक्लूड करना। अगर वो सोशल मीडिया है वहां पे तो वो काफी प्रोपोर्शन में हो रहा है, लेकिन वर्क प्लेस में हो सकता है, या घर में हो सकता है, या जॉइंट फैमिली है वहां भी ये सब बातें होती रहती है। तो इनडायरेक्ट एग्रेशन है तो एक कोई रिलेटिव आ गई तो बाकी के लोग चुपचाप हो गए, उसको लगेगा कि हाँ ये सब मेरे बारे में बात करे थे और मेरे आते ही सब चुपचाप हो गए। तो कभी कभी बात नहीं हो रही होती है तभी भी ऐसे करते थे, इसमें लैंग्वेज तो है ही नहीं, लैंग्वेज ना यूज करके भी आप एग्रेशन दिखा सकते हैं। तो रिलेशनल एक मैंने एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि रिलेशनल एग्रेशन क्या है, सोशल एग्रेशन क्या है, ये आपको
एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो रिसर्च के थ्रू पाई गई है कि जो एडल्सेंट बच्चे हैं, कुमारवयीन जो लड़के लड़कियां हैं, तो वो जो तीसरा टाइप है सोशल एग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और ये सोशल एग्रेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है। उसके उसके बाद आके वो उनके कॉलेज लाइफ में, अगर वो 10th में 11th 12th में, वहां पर उनके फ्रेंड्स में और फिर फैमिली में, यहाँ सब पर दिखाई दे रहा है। और इसके हमें जागरूक रहना चाहिए। एक रिसर्चर है M.K. अंडरवुड, तो उन्होंने रिसर्च किया चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, वो रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने पाया कि 3rd ग्रेड के स्टूडेंट्स है, 3rd ग्रेड मतलब कि तीसरी कक्षा के विद्यार्थी, 250 स्टूडेंट्स का उन्होंने स्टडी किया। किस लिए कि वो ये बच्चे एंगर कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे, रिलेशनशिप्स में वो एंगर कैसे कम्युनिकेट करे, फेस टू फेस जब करते हैं तो क्या होता है। और जिसके बारे में उसका गुस्सा है, सपोज उनको माँ पर गुस्सा आया है, तो माँ के सामने वो क्या कहते हैं, और माँ एब्सेंट है तो क्या कहते हैं। तो इस पर रिसर्च किया है। तो जो ये सब लैंग्वेज मीडिया इन सब का एकत्र आकर जो जिस पर जो रिसर्च हो रहा है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये वाला रिसर्च हम लैंग्वेज के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसमें पाया क्या गया, टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैज बिकम अ की फैक्टर इन सोशल एग्रेशन। और इसको टर्म भी दी गई है जो आपको पता होगी, साइबर बुलिंग। तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। और देखिए, हम सोचते हैं कॉलेज के लड़कों में हो रहा है। M.K. अंडरवुड ने जो स्टडी किया वो तीसरी कक्षा के बच्चों पर किया। क्या एज होती है तीसरी के बच्चों की? आप सुन रहे हैं या मैं अकेले ही से बात करती जा रही हूँ? यस मैम। तीसरी के बच्चे मतलब कितने छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चे। और उनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? और वो फिर साइबर बुलिंग करते हैं। और ये साइबर बुलिंग किसी और को एक विक्टिम बनाना, और वो ये जो उसका असर होता है वो पूरी लाइफ तक वो और एक कोई बच्चा कैरी करेगा। तो ये रिसर्च से पाया गया कि टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की वजह से इनका ये सोशल एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 3 प्रकार का एग्रेशन ऑलरेडी थी, वो सोशल प्लेटफॉर्म आ गए इसलिए सोशल एग्रेशन बढ़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म और एक नया मिल गया है जहां पे वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो बढ़ावा उनको मिल रहा है, और फिर उनको जस्टिफाइड लगने लगा है कि ऐसा एंगर आना जस्टिफाइड है, मुझे गुस्सा आता है और किसी पर वो गुस्सा निकालना ये भी जस्टिफाइड लग रहा है। और वहां वो बुलिंग के ग्रुप्स बना रहे हैं और किसी को टारगेट कर रहे हैं। और एक स्टडी किया गया जिसमें पाया गया, while socially aggressive students were vastly disliked, they are alleged they were understood to be the popular kids and had the highest marked social status। जो सोशली एग्रेसिव बच्चे थे वो किसी को पसंद नहीं थे, लेकिन उनके बारे में बाकी के बच्चों की धारणा थी कि वो सबको पसंद है या उनका सोशल स्टेटस ज्यादा है। ऐसा उनकी क्या अंडरस्टँडिंग थी। आय डोंट नो हिंदी में उसको यूज क्या वर्ड, तसं त्यांना वाटत होतं। आवडत ती मुलं कुणालाच नव्हती, जी सोशली अग्रेसिव्ह मुलं होती ती कुणालाच आवडत नव्हती, पण त्यांना असं वाटतं की अग्रेसिव्ह असलं की तुम्हाला सोशल स्टेटस जास्त मिळतोय, ती जास्त पॉप्युलर आहेत असं है ना उगीच वाटते। एंड देन व्हाट हैपन्स, अगर आपको लग रहा है कि जो सोशली अग्रेसिव लड़के हैं वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे लेकिन वो पॉपुलर है, तो मैं क्या कोशिश करूंगी, मुझे भी पॉपुलर बनना है, तो मुझे भी सोशली एग्रेसिव दिखाई पड़ना चाहिए। मुझे सोशली एग्रेसिव बनना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सोशली एग्रेसिव हो जाऊं ताकि मैं पॉपुलर बन जाऊं, ताकि दूसरे लड़के मुझे अप्रिशिएट करें, डरे। तो डर ही पॉपुलैरिटी का मैकेनिज्म बन जाता है। और ये छोटी एज से जो चालू होता है, तो फिर ये जब 25 ईयर्स 30 ईयर्स के हो जाते हैं, तब तक ये सब सेटल डाउन क्रिस्टलाइज हो गया है, इनको चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और थोड़े नंबर्स, इट वॉज बिलीव फीमेल्स वेर नॉन कॉन्फ्रंटेशनल, ऐसे हमें लगता है। और मुझे यकीन है कि अभी जो पार्टिसिपेंट्स है उनमें से जो सारे पुरुष है उनको लग रहा होता होगा कि मैं भी फीमेल हूँ, और यहाँ कुछ फीमेल्स मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन कितने सारे पुरुष क्या सफर कर रहे हैं इनको क्या पता। पता है, हमें भी पता है। और सब स्त्रियां बहुत गरीब होती है, झगड़ालू नहीं होती,
सोशली एग्रेसिव या और किसी तरह से एग्रेसिव नहीं होती है, ऐसा नहीं है। जो रिसर्च किया गया उसमें पाया गया कि बॉयज टेंड टू बी ओवरटली एंड फिजिकली एग्रेसिव। ओवरटली मतलब दिखाई पड़ता है वो एग्रेसिव है, उनके बिहेवियर में फिजिकल एग्रेशन ज्यादा यूज करते हैं। गर्ल्स आर मोर इनडायरेक्टली सोशल एंड रिलेशनली एग्रेसिव, तो उनमें एग्रेशन नहीं है ऐसा नहीं है। और रिसर्च नहीं कह रहा, और कोई भी नहीं कह रहा, और महिलाएं भी नहीं कह रही है। वो एग्रेसिव है लेकिन उनके तरीके अलग है, इनडायरेक्ट है, सोशली है और रिलेशनली एग्रेशन। जो 3 एग्रेशन के प्रकार हमने देखे, फिजिकल एग्रेशन में बॉयज ज्यादा है, सोशल एंड रिलेशनल एग्रेशन में महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। कार्टून कैरेक्टर्स का स्टडी किया गया, टेलीविजन के जो टेलीविजन पर आते, जो बच्चे देखते, कई बार बड़े भी देखते, तो उसमें पाया गया 76.9% ऑफ फिजिकल एग्रेशन वाज कमिटेड बाय मेल कैरेक्टर्स। क्या होता है कि ये कार्टून देख के लड़कों को भी लगने लगता है कि मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है, फिजिकल एग्रेशन से। तो जो मॉडल सामने है वो फॉलो करने की टेंडेंसी होती है। और दूसरी तरीके से भी होता है कि जो एक्चुअली होता है, पुरुष सोशल फिजिकल एग्रेशन ज्यादा दिखाते, तो वो कॉपी करके टेलीविजन पर वही दिखाते हैं कि मेल कैरेक्टर्स में फिजिकल एग्रेशन ज्यादा, फीमेल कैरेक्टर्स में सोशल एग्रेशन ज्यादा, ऐसा कॉपी भी करने का तरीका था। लेकिन बच्चों के दिमाग पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है, तो वो फिजिकल एग्रेशन यूज करना उसमें कुछ गलत नहीं मानने लगे, उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। 23.1% ऑफ फिजिकल एग्रेशन वाज कमिटेड बाय फीमेल कैरेक्टर्स, ये सीरियल में हो रहा है। 37.2% ऑफ सोशल एग्रेशन वाज कमिटेड बाय मेल कैरेक्टर्स, 62.8% ऑफ सोशल एग्रेशन वाज कमिटेड बाय फीमेल कैरेक्टर्स। अब क्या कहेंगे हम, फीमेल्स एग्रेसिव नहीं है, तरीके अलग है बस। 62.8, 76.9, 37.2, क्या कम है? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम है, फीमेल दिखाती नहीं, ऐसा नहीं है। लिसनिंग, जिसमें हम सब लोग कमजोर है। हमें बात करना अच्छा लगता है लेकिन किसी को सुनना बहुत बोरिंग होता है। अगर कंपल्शन ही नहीं तब तक हम किसी को सुनना पसंद ही नहीं करते। और सभी का है, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है लेक्चर सुनने में, मुझे भी नहीं लगेगा, सभी को नहीं लगता है। कौन अच्छा होता है ज्यादा लिसनिंग में, आपका क्या अंदाजा है? आपको मेरा प्रश्न समझ में आया? Leaders are good listener, I believe. Okay, that is what we tend to tell people, but आपका ऑब्जर्वेशन है लीडर सुनते हैं? Yeah, there are types of, or we can say styles of leaders. So there are different styles, and you have experienced different kinds of leaders, different styles. But have you experienced a leader who actually listens patiently? Yeah, ma'am, Most the of the time I corporates have. in our area, they come and we speak and they listen. And do they act they are listening, or do they really listen? In some cases they assure and do. In some cases they just assure only. Okay, who are these leaders, men or women? Most of them are men, madam. And men are good listeners or women are good listeners? What do you feel? Yeah, that is true. Men should be considered as good listeners then. We don't want to teach men anything. Just I'm curious to know what you feel. Who are better listeners? Yeah, men are better listeners, madam. Men are better listeners. Women are speakers. Better speakers. You can't see even better speakers. लेकिन जनरली क्या माना जाता है? पुरुष अलग मानेंगे, महिलाएं अलग मानेंगी, ये भी सही है। तो आई वांट ऑल पार्टिसिपेंट्स टू कंट्रीब्यूट ऑन दिस। व्हाट डू यू थिंक, हु आर बेटर लिसनर्स? और किसको ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए? Now this experience should not come from your house, this should come from outside also. A judicious mix of family life and professional life. So give response accordingly. संयमी व्यक्ती मॅडम जास्त जोरात जोरात मॅडम, जोरात मॅडम प्लीज. हॅलो, हा, जो संयमी असतो तो चांगला लिस्नर असतो असं वाटतं म्हणजे मला. तुमची तो आयडियल झाला, असा संयमी माणूस सापडला तर छानच आहे. पण जी
ऍक्च्युअल परिस्थिती दिसते त्याच्यातनं आपल्याला काय दिसते की कोण जास्त ऐकण्यामध्ये पुरुष चांगलं कोण आहे? पुरुष ऐकून जास्त घेतात चांगले. जास्त का हो. स्त्रिया ऐकून घेतात? स्त्रिया जर ऐकून घेतात असं. मैत्रिणीचं हो, हो. बघितलं ना, मैत्रिणीचं बिहेवियर बघितलं तर त्या एकमेकांचं ऐकून घेतात. ते पुरुषांचं किती ऐकून घेतात माहित नाही, पण मैत्रिणींच्या मध्ये तसंच चालतं. पण आता मित्रांच्या मध्ये पण तसंच चालत असेल. आय डोंट नो, बिकॉज this is something only men can tell us. So if two men are talking to good men friends, male friends are talking with each other, probably they listen to each other. Just like women friends listen to each other. Am I right? काय तुम्ही सांगा. आप बताइए मुझे क्या होता है? Ma'am, may I? Yes, please. No need of Ma'am, permission. Just we can't differentiate between men and women that who is best in listening. I think there cannot be any scientific parameters. Yes, we can do research, and according to the sampling, okay, we yeah, can come to the conclusion. right, But right. Sampling cannot is important be here such because a what yeah. you're right, you're right. Listening is dependent on the things that what you're actually listening to. कि, area of interest, okay, the subject, the content, the atmosphere, Right. your temperament, your mood. So all these factors are important while listening. So we can't differentiate between men and women. Both Right, are you're good right. listeners, but Both that can be is bad listeners also. dependent on the Other area of factors. interest. Yeah. Yeah, now this is some research I have kept on the slide here. Women give importance to listening. This is what research finds. But as you say, it depends to a very large extent on who you have included in your sample size. Exactly who these people are, because it cannot speak for all the men in the world and all the women in the world. But generally, people have said this again and again in research that women give importance to listening. Now, giving importance to listening is a one thing, and actually listening is another thing. So, women feel that you should not interrupt when someone else is saying, and this has been found in research. When there are group discussions, especially if you have group discussions as a topic, as an academic topic, as a test instrument, then you find that men tend to interrupt others more. Women tend to listen to others and engaging in a conversation more than interrupting. When you interrupt, it tends to change the topic also. So it leads to another question: who changes more topics? It has been found that men change the more topics. So all these things, they cannot happen in vacuum. That all no other factor is influencing, only gender is important here, and then you have conclusive results. This has not happened, and probably will never have such a conclusive result also. And maybe then this question also may not be very important. So why take up a topic like who is a better listener? So do we actually use listening in a particular task? These people, where they implementing the good conversational tips that are always given to them, this could be more relevant than asking just whether men interrupt more, whether more women listen to carefully. This may be misleading questions to start with. When men talk, women listen and agree. However, men tend to misinterpret this agreement, which was intended in a spirit of connection, as a reflection of status and power. This has been found. Now, the research that I'm pointing out here has been done mostly at workplaces. So this is what has happened. And at workplaces, it is a male dominant territory. Men have got used to not their power, but at least power of men bosses, and said that, so that could be one of the reasons. So when women tend to listen to establish some kind of rapport with the people, men tend to misinterpret it as my input is very important, I have power, it is a question of my status. And then sometimes ego questions arise. A man might conclude that a woman is indecisive and insecure as a result of her listening and attempts of acknowledgement. So he presumes that whatever he's saying is very important just from the fact that she's listening. So what will happen if this continues? Then woman will learn that if I keep on listening, if I don't keep on interrupting, they are going to presume they are always right, and this is going to give rise to incorrect behavior in both men and women. The act of giving information frames the speaker with a higher status.
while the act of listening frames the listener as lower. And now if you do not want to be seen as lower or subordinate, then what will you tend to do? You will tend to keep on talking. You are all teachers and you have been teaching group discussion. Maybe if you are teaching at engineering college or MBA, group discussion is an important activity there, as a teaching tool as well as an evaluation tool. So what is taught there? The person who speaks more, who takes more turns, often gets greater marks. So what are they learning there? The tools that we use as pedagogical tools or as evaluation tools sometimes may not be good life skills. They may be teaching them something incorrect, which is going to hamper their progress in their professional jobs. So we need to look at all these things together. However, when women listen to men, they are not necessarily thinking in terms of status, but in terms of connection and support. Now, I feel that this research has been done by women on women, and they tend to be slightly partial towards women, because all the things are said from greatly women's perspective. All right. Now, more serious problems. We are throughout this lecture we have been talking about men and women, how men talk, how women talk, what are the styles, how are they different. But it's not just the society is only composed of men and women. There are different combinations, different sexualities and gender identities too also. So what about them? Has there been research on them? So men are stereotyped to be more of a public speaker and leader. Women are stereotyped to talk more in private among their family and friends. For women, society views their use of communication as a ways of expressing feelings and emotions. These are all presumptions about men and women. This is what common man on the road Madam, understands, feel. These are all emotional responses. Yes, does anyone want to talk? Okay, against this, what research finds out? More objective kind of research finds out. Helena Leet Pellegrini. She found that male experts speak more verbosely than their female counterparts. Now, this is her research. How many days into this course are you in now? How many days are remaining yet? Do you get my question? You're attending this refresher course. How many days are remaining? Is it half complete? Ma'am, 4 more days. Yes, 4 more days. Now, do a thing. You are going to have male and female experts do your own observations and find out who is more verbose, men or women. This research was about experts, male and female experts. So find out. You have a small sample size here and do your own research and find out. There is a important scholar, Jennifer Coates, and she has found males are afforded more attention in the context of the classroom, and that this can lead to their gaining more attention in scientific and technical subjects. Now, this has to do with psychology. This is not just language. This is not just workplace, and this is not just academic context. What she has found, this is very important. उन्होंने क्या पाया? जब मेल एक्सपर्ट्स आते हैं तो उनको स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट ज्यादा अटेंशन देते हैं. इसकी वजह से उनको मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट होता है और साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में उनका प्रोग्रेस ज्यादा होता है. ये स्टूडेंट्स के बारे में नहीं चल रहा है, जो टीचर्स आ रहे हैं उनके बारे में है. तो आप ज्यादा अटेंशन देते हैं इसलिए उनके साइंटिफिक और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में एडवांसमेंट उनकी ज्यादा होती है, which in turn can lead to their achieving better success in those areas, ultimately leading to their having more power in a technocratic society. आपका अनुभव क्या है? हो सकता है कि आपके यहाँ जो टेक्निकल अरेंजमेंट्स करनी होती है, मुझे लगता है वैभव जी कर रहे हैं. कितनी बार ये जो रोल होता है वो फीमेल करते हैं? कौन सा रोल मैडम? इंटरनेट जो टेक्निकल पार्ट है ना, जो इंटरनेट का कनेक्शन है, साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, पिक्चर दिखाई दे रहा है, स्लाइड्स आगे जा नहीं रहे हैं, ये सब जो टेक्निकल हेल्प होती है वो सब कौन ऑफर करता है? ज्यादा करके ज्यादा सिचुएशंस में, यही क्या नहीं है, हमेशा मेल मेल करते हैं. तो ये Yes, जेनिफर कोच ने क्या पाया कि उनको अटेंशन ज्यादा मिलता है
और इसलिए उनका प्रोग्रेस भी ज्यादा होता है। उनकी लॉन्ग रन में वो परफेक्ट बनते हैं ज्यादा, और वो उसकी रीजन वो चीज उनको आती है। इसकी ये तो होती है बात, उनको आती है, ये ऑफ कोर्स राइट है, लेकिन जो उनको साइकोलॉजिकल बेनिफिट जो मिल रहा है उसका उसमें ज्यादा रोल है। और फिर पावर किसके हाथ में जाती है? हमारी सोसाइटी टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी बन रही है, और ये टेक्नोलॉजिकली ज्यादा ज्यादा आगे चले जाते हैं। तो होता क्या है कि ये सब नॉलेज पावर ये सब मेल के हाथों में रहती है, क्योंकि उन्होंने अच्छा थोड़ा किया है और उनको अटेंशन ज्यादा मिला है। ओके, विमेन आर टिपिकली लेस कंसर्न विथ पावर। उनको पावर से लेना देना ही नहीं है। सबको होता है ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बहुत इसेंशियलिस्ट आर्गुमेंट हो जाएगी फिर कि किसी भी विमेन को पावर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उनको उससे ज्यादा कंसर्न नहीं है, उनको ज्यादा रिलेशनशिप्स में कंसर्न है, सबको साथ में ले जाने में कंसर्न है, इंस्टीट्यूट की प्रोग्रेस में सब कंसर्न है। ऐसा तो मेन का भी होता है, लेकिन रिसर्च में उनका प्रोपोर्शन जरा ज्यादा पाया गया है। ऐसा नहीं कि ये ब्लैक एंड व्हाइट एरियाज नहीं है कि सब पुरुष एक जगह, एक सब फीमेल्स एक जगह और उसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है। प्रोपोर्शन विमेन का होता है कि उनको पावर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पोजीशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। Girls and women feel it is crucial that they are liked by their peers. A form of involvement that focuses on symmetrical connection. कि सबको peers के साथ रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, सबको वो हाँ ये अच्छे करती है, ये काम अच्छा कर रही है, इसमें उनको समाधान ज्यादा है। और या पोजीशन मिलने से ज्यादा उनको लोगों को वो पसंद आ रहे हैं, उनका काम पसंद आ रहा है, इसमें ज्यादा खुशी है। Boys and men feel it is crucial that they are respected by their peers. उनको रिस्पेक्ट चाहिए, पसंद में आऊं या नहीं आऊं, रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट कब आता है? कभी कभी डर लगता है तो भी रिस्पेक्ट हो सकता है, तो भी उनको चलेगा। दिस डिफरेंसेस इन प्रायोरिटीज इम्पैक्ट द वेज इन विच मेन एंड वुमेन कम्युनिकेट। अगर उनको ये लगता है तो कम्युनिकेशन में उस पर असर होगा ही। वो मुझे क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, तो रिस्पेक्ट कैसे पाना है? तो मैं अलग तरह से बात करूंगी। मुझे क्या चाहिए? लोगों को मेरा काम पसंद आना चाहिए, they should like me, so I use language differently. What I desire, whether I desire power, whether I desire that I am liked, whether I desire respect, this is going to impact my behavior and my use of language. A woman's communication will tend to be more focused on building and maintaining relationships. Men, on the other hand, will place higher priority on power. Their communication styles will reflect their desire to maintain their status in the relationship. Now, all these things I implore you to take with a pinch of salt. These are tendencies. These are not watertight compartments. Proportion की बात है। ज्यादा पुरुषों का में ये पाया गया है, ज्यादा महिलाओं में ये पाया गया है। ऐसा नहीं कि सब महिलाओं में ऐसा है, सब पुरुषों में ऐसा है और 100% 50-50 डिवाइड करके पाया गया, ऐसा नहीं होता है। Men tend to tell stories as another way to maintain their status. Primarily, men tell jokes or stories that focus on themselves. Women's stories revolve not around themselves, but around others. By putting themselves on the same level as those around them, women attempt to downplay their part in their own stories, which strengthens their connection to those around them. अब इसका दोनों तरह से हो सकता है कि एक आप ले सकते हैं कि सब झूठा डेटा है, ये भी हो सकते हैं आप। एक महिला ने सब लिखा है इसलिए महिलाओं को बड़ा चढ़ा के दिखा है, ये हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूट के लिए क्या चाहिए, ये रोल मेन ज्यादा सक्सेसफुली दे सकते हैं इंस्टीट्यूट को, विमेन नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको रिलेशनशिप से मेंटेन बिल्ड करने, इंस्टीट्यूट को बिल्ड नहीं करना है। ऐसा उनके अगेंस्ट भी ये वर्कआउट हो सकता है। तो लिखने वाला सब सब्जेक्टिव डेटा दे रहा है ऐसा होगा नहीं। उन्होंने कुछ ना कुछ तो सैंपल लिया है और जो भी महिलाएं उनके सैंपल साइज में होंगे उनमें वो पाया गया होगा। Okay, this is about politeness, which is a continuation. That is not very important. I'll come to more important things here. Mulak study speech patterns of male versus female characters in popular children's television program. 13 out of 37 language variables showed significant differences. ये टेलीविजन प्रोग्राम्स तो रियल लाइफ का नहीं है, किसी ने वो तैयार किया है, किसी ने डायलॉग लिखे है, तो ये तो कंस्ट्रक्टेड है, ये तो नेचुरल नहीं है।
लेकिन उसमें क्या पाया गया है कि 13 कैटेगरीज में 13 वेरिएबल्स चेंज होते हैं। हायर इन फ्रीक्वेंसी फॉर मेल्स, वो क्या पाया गया? वोकलाइज्ड पॉजेस, एक्शन वर्ब्स, प्रेजेंट टेंस वर्ब्स, जस्टिफायर, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ग्रामेटिकल एरर्स, जिसको हम एरर्स कहेंगे, लेकिन अगर हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है तो हम तो एरर उसमें कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एरर हुए हैं क्योंकि उनका अटेंशन काम पे ज्यादा है, भाषा पे नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? रियल लाइफ में मैन के स्पीच में ये सब पाया नहीं गया है, ऐसा कुछ एविडेंस अभी तक तो नहीं है, लेकिन टेलीविजन प्रोग्राम्स में, जो बच्चों के लिए बनाए गए टेलीविजन प्रोग्राम्स में, उसमें दिखाया गया है। अब इसका परिणाम क्या होगा? जो थोड़ी देर पहले हमने एनिमेटेड का देखा था, कार्टून शोज में देखा था, उसी तरह का है कि पुरुषों का बिहेवियर ऐसा होता है, ये आइडियल बिहेवियर है, ऐसा हम बच्चों को सिखा रहे हैं। वोकलाइज पॉजेस मतलब जो हमने पॉज लिए, बात करते समय पॉज लिए, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन वो सिर्फ शांतता नहीं है, वोकलाइज्ड है, जो इंपॉर्टेंस दिखा रही है कि भाषा, इस तरह की भाषा जो है वो पावरफुल है। एक्शन वर्ब्स, प्रेजेंट टेंस वर्ब्स, हम प्रेजेंट में जीते, पास्ट में नहीं जीते। हो सकता है कि ये जो डायलॉग लिख रहे, स्टोरी लिख रहे, इनके दिमाग में जेंडर डिफरेंसेस बहुत एंट्रेंच्ड है, और वो ज्यादा करके वो अपने हीरो को हीरोइक बनाने के लिए, मैस्कुलिन बनाने के लिए, जो ट्रेंड्स फीमेल स्पीच में पाए गए उसके अगेंस्ट वो ज्यादा करके ये एग्जैजरेट करके बिल्ड करे। और फीमेल के क्या कैरेक्टर्स में क्या दिखाया गया है? सभी तरह के वर्ब्स है, सिर्फ एक्शन वर्ब्स नहीं है, सभी वर्ब्स यूज करें, अनसर्टेनिटी वर्ब्स, एडवर्बियल्स बिगिनिंग सेंटेंसेस, जो पुरुषों के इसमें एडवर्बियल से बिगिनिंग होने वाले नहीं आते हैं, जजमेंटल एडजेक्टिव्स, कॉन्क्रीट प्रोनाउन, सॉरी कॉन्क्रीट नाउन्स, पोलाइट फॉर्म्स, ये उनके स्पीच में है। और जैसे पुरुषों का एक आइडियल मॉडल हम बच्चों को दिखा रहे हैं, वैसे स्त्रियों का भी दिखा रहे हैं कि अगर आपको अच्छी लड़की बनना है तो ये बिहेवियर फॉलो करो, तुम्हारे स्पीच में पोलाइट फॉर्म ज्यादा आने चाहिए। तो होता क्या है कि जो जेंडर डिविजन्स घर में चालू होते हैं, बचपन से सीख रहे, स्टोरीज से सीख रहे, टेलीविजन पर भी वो ही आ रहे, तो वैसा ही वो मेंटेन करने में ये सब कल्चरल फॉर्म्स रोल प्ले करें। Okay, one last sentence. In addition, female characters had longer sentences on average. तो जब डायलॉग लिख रहे हैं तो सभी के लिए उतने ही डायलॉग क्यों नहीं लिखे जा रहे? एक्शन वर्ब्स वो ज्यादा रोल तो प्ले लड़के कर रहे हैं, लेकिन बात करने का अवसर लड़कियों को ज्यादा आ रहा है। तो हो सकता है कि तब उनको ये भी दिमाग में है कि लड़कियां बातें जाते करती है, और वही उसमें दिखाते हैं, दिखा दिखा के वही बच्चों को भी सिखाते हैं। और कुछ टेलीविजन प्रोग्राम्स का स्टडी है। मेल कैरेक्टर्स वर मोर लाइकली टू आस्क क्वेश्चंस, एजर्ट ओपिनियंस, डायरेक्ट अदर्स देन फीमेल कैरेक्टर्स। एक दूसरे को ऑर्डर्स देना, डायरेक्ट करना, ये सब मेल कैरेक्टर्स को पार्ट दिया जाता है। फीमेल कैरेक्टर्स वर मोर लाइकली टू रिसीव और मेक कमेंट्स अबाउट बॉडी और ब्यूटी देन देयर मेल काउंटरपार्ट्स। मतलब उनका रोल ही इतना डाउन प्ले कर दिया है, और वो वही मॉडल बच्चों को बार बार अलग अलग तरीके आप टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे तो वही आता रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेल और फीमेल छोड़ के ट्रांसजेंडर में क्या हो रहा है। Much work on language and gender has focused on differences between men and women and cisgender people. Who are cisgender people? The children who are born with a sexual identity which agrees with with the sexual identity announced by the doctor at the time of birth. So that is called a cisgender. So if the doctor says it's a baby boy, and the boy when growing up also keeps on feeling, yes, I have the same feelings which are associated with boy, then he is a cisgender. If he starts feeling some at some later time that okay, I don't feel like a boy, I feel more like a girl, but I have been classified as a boy at my birth, then he is a transgender. Okay. So explorations of how individuals of all genders perform, this is being investigated in recent times. This was not done earlier because basically female language पर research ही 60-70s में चालू हुआ, तो transgender पर तो बहुत लेट ही होगा. Early work on transgender people's voice language came out in speech pathology. So speech pathology मतलब क्या है कि कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए पैथोलॉजिस्ट जो है
हो सकता है कि वो स्पीच पैथोलॉजी हो, काउंसलर हो, डॉक्टर हो, न्यूरोसर्जन हो, ये सब लोग इकट्ठा आकर जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो करते, उनके रिसर्च में पहले से ये पहला चालू हुआ। जैसे कि वॉइस थेरेपी देते हैं, वो वॉइस फेमिनाइजेशन फॉर ट्रांसजेंडर विमेन, जिन्होंने सेक्सुअलिटी चेंज करके ली है ऑपरेशन करके या मेडिकल से, तो उनको वॉइस पर काम करना पड़ता है ताकि उनकी आवाज जो चेंज हुआ है जेंडर उसके अनुसार हो। इसलिए जो थेरेपी देते हैं उनके काम से पहले ये चालू हुआ। लाल जिमन, she has been an influential worker in this field. In US and English speaking trans and gender diverse communities, linguistic features at various levels are found important for naming trans identities. अब ट्रांस आइडेंटिटीज से कनेक्टेड है, जितना मेल और फीमेल में जेंडर डिवीजन का जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो ये जब क्वेश्चंस हम देखने लगते हैं तो महसूस होता है कि हम बहुत ट्रिवियल क्वेश्चंस पर बातें करते रहे। इनकी ट्रांसजेंडर्स की लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वाइवल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो ऐसा इस तरह का रिसर्च वहां होना चाहिए अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो सिर्फ फर्क है, इनको ओपिनियंस पर ही चल रहा है वहां, इसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, पुरुषों को लगता है मुझे क्वेश्चन ही पूछ रही है और उसको लगता है ये मेरे साथ एग्री नहीं कर रहा है। ये तो बहुत ट्रिवियल हो गया। यहाँ क्या चल रहा है देखिए, उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वेदर फोनेटिक फीचर्स, एग्जांपल पिच एंड स प्रोडक्शंस, स साउंड्स जो फ्रिकेटिव्स एफ्रिकेट्स है, जेंडर वॉइस कंस्ट्रक्शन में उसका रोल क्या है, पिच का, क्योंकि हम जब किसी का आवाज सुनते हैं तो उसके साथ हमारे दिमाग में कुछ जेंडर आइडेंटिटीज, सेक्सुअल आइडेंटिटीज आती है, तो इसके साथ वो होता है। और यहाँ स्पीच पैथोलॉजिस्ट का, उनको ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारी आइडेंटिटी क्या है और दूसरा हम हमारी तरफ कैसे देख रहा है, ये सब इस पर डिपेंडेंट अगर है तो इस पर ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए और इस लेवल के सीरियसनेस से होनी चाहिए। लेक्सिकल आइटम्स, एग्जांपल बॉडी पार्ट नेम्स एंड प्रोनाउंस, जब अलग अलग तरह की सेक्सुअल आइडेंटिटीज पता चलने लगी है, उस पर बात होने लगी, तो पता चला कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है इन सब के बारे में बात करने के लिए। तो पहले लेक्सिकल टर्म्स होने चाहिए, लैंग्वेज को बढ़ाना चाहिए। ये बात न करते हुए सिर्फ इमोशंस, ओपिनियंस पर हम कितनी देर तक बात करेंगे। हाउ लेबल्स एंड प्रोनाउंस हैव अलाउड नॉन नॉर्मेटिव जेंडर इंडिविजुअल्स टू क्लेम लिंग्विस्टिक एजेंसी। अगर आपके पास में जो आपको महसूस हो रहा है या आपको जो कहना है, जो फैक्ट्स है, वो कहने के लिए शब्द ही नहीं है, तो लिंग्विस्टिक एजेंसी मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है। तो आप कैसे दूसरे के सामने ये बात कहेंगे, या कैसे हम आप एजेंसी क्लेम करेंगे कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे खुद का डिसाइड करने के लिए मुझे क्या कहना है, ये आपको सुनाने के लिए मेरे पास राइट है, ये क्लेम करने के लिए भाषा नहीं है आपके पास। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड लिंग्विस्टिक्स में जो काम हो रहा है वो फाउंडेशनल लेवल का काम हो रहा है वहां पे। ये लेक्सिकल फीचर्स बढ़ाने हैं, या फोनेटिक फीचर्स का जेंडर्स के साथ कैसे कनेक्शन आता है, वो कैसे ट्रेनिंग देना है, वो क्लेम उनको वो ग्राउंड कैसी करनी है, as well as to challenge and reclaim pathological terminology ascribed by doctors and psychologists. Oftentimes, इसके इसके लिए आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों के बीच का टाइम, यूरोप अमेरिका में जो साइंटिस्ट थे और जो ट्रांसजेंडर थे और जो जूस थे, उन पर कितने अत्याचार हुए हैं, इसके लिए बहुत सारी फिल्म्स भी है, वो थोड़ी देखिए या फिर नेट पे उसके बारे में पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट ये बहुत प्रिजुडाइज्ड इंडिविजुअल्स होते थे, तो है साइंटिस्ट, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इनजस्टिस किया है, सबसे प्रेजुडिस बिहेवियर उन्होंने किया है काफी समय तक, और आज भी चल रहा है। और उनके बाद थर्ड नंबर आएगा जजेस का। तो इनका पहले तो उनका ट्रेनिंग होना चाहिए, और जो उनसे जो गलतियां हो रही है तो वो पॉइंट आउट करने के लिए इन लोगों के साथ उन लोगों के पास भाषा चाहिए, उनको राइट्स चाहिए, उसके लिए उनका मूवमेंट्स चल रही है, स्ट्रगल्स चल रहे हैं।
और जैसे वोकेबलरी फोनेटिक फीचर्स के बारे में जो है वही सेमियोटिक सिस्टम के लिए है। सेमियोटिक मतलब क्या है? स्टडी ऑफ साइंस सिस्टम्स, जिसमें सेमियोटिशियंस कहेंगे कि लिंग्विस्टिक्स पूरा ही उसका भाग है, और लिंग्विस्ट कहेंगे कि सेमियोटिक्स हमारे स्टडी का एक छोटा भाग है। तो अगर आप लैंग्वेज को एक साइंस सिस्टम मानते हैं तो लिंग्विस्टिक्स विल बी अ पार्ट ऑफ सेमियोटिक्स। सो लिंग्विस्टिक या एस्थेटिक स्टाइल्स है, तो उन सब का स्टडी भी इसमें आता है। LGBT linguistics is the study of language as used by members of LGBT communities. For this, there is a term called lavender linguistics, which was advanced by William Leap. So, remember this word. Saying LGBT linguistics was found not very proper by many people. So, William Leap used this term lavender linguistics in 1990s. So, what does the lavender linguistics do? It encompasses a wide range of everyday language practices in LGBT communities and queer linguistics concerning the effect of heteronormativity on expressing sexual identity through language. तो क्या इस पर इम्पैक्ट होता है? जाने दीजिए, ये हिंदी में एक्सप्लेन करना मेरे लिए कठिन होगा, तो ये डेफिनेशन बस आप बाद में एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको आप खुद ही हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो मुझसे ज्यादा समझ में आएगा। लैंग्वेज, any aspect of spoken or spoken or written linguistic practices, including speech patterns and pronunciation, use of certain vocabulary, or an elaborate alternative lexicon, such as polari. पोलारी क्या है? एक स्लैंग और कांट लैंग्वेज वैरायटी है ब्रिटेन और आयरलैंड की, जो एक्टर्स या सर्कस के वर्कर्स है वो यूज करते हैं, या रेसलर्स है, मर्चेंट नेवी सोल्जर्स है, क्रिमिनल्स है, सेक्स वर्कर्स है, ये सब कल्चर है, ये सब स्लैंग कांट एक उनकी एक कोडेड लैंग्वेज है। तो उसका जो 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 पोलैरी के टर्म्स है, उसमें प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसमें कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इस पर भी रिसर्च चालू है। तो ये जो पोलैरी है वो ज्यादा करके LGBT लोग उसमें काफी है, तो उसमें कितना प्रभाव उस पर आया है, और वो स्टडी करके हमें जेंडर्ड लैंग्वेज के बारे में, मेल फीमेल जो नॉर्मल डिफरेंस है उसके भी बारे में ज्यादा पता चल रहा है। Some natural languages have intricate systems of gender specific vocabulary. जैसे कि आयरिश साइन लैंग्वेज है। ये जरा पेक्युलर एग्जांपल्स लगेंगे आपको, लेकिन टाइम काफी कम है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी ये बताने की कोशिश करती हूँ। इसमें साइन लैंग्वेजेस तो नेचुरली भी डेवलप होते हैं, हम इन लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है वो कैसे साइन लैंग्वेज सीखते हैं, स्कूल में जाके सीखते हैं, या जैसे हमारी लैंग्वेजेस डेवलप होती है वो नेचुरली डेवलप होती है क्या, ये भी हमें पता नहीं होता है। तो इसमें पाया गया है कि जो आयरिश साइन लैंग्वेज है, ड्यू टू सिंगल सेक्स डेफ स्कूल्स, मतलब कोएड नहीं था, तो सिर्फ लड़कियों की, डेफ लड़कियों की आयरिश स्कूल, मतलब आयरलैंड में जो थी, या सिर्फ लड़कों की स्कूल, इसमें क्या हुआ है कि मेल वोकेबलरी डेवलप हुई है, साइन लैंग्वेज की वोकेबलरी, और फीमेल वोकेबलरी अलग डेवलप हुई है। तो ये एक ऐसे कुछ पेक्यूलियर केसेस कभी कभी पता चलती है, और इनके स्टडी से हमें नॉर्मल कैसा होता है इसके बारे में कभी कभी एक अचानक इंसाइट मिल जाती है। वैसे एक वालपीरी नाम की एक ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल कम्युनिटी है, तो इनकी लैंग्वेज में पाया गया है कि ऑक्सिलरी साइन लैंग्वेज, जो ज्यादा उम्र की कम्युनिटी में महिलाएं हैं, उनके पास एक ऑक्सिलरी साइन लैंग्वेज है। मतलब वो एक दूसरे से बात करने के लिए हमेशा के जैसे लैंग्वेज तो होती है, मेन वीमेन बात करते हैं वहां सबके कॉमन लैंग्वेज है, विमेन वीमेन बात करते हैं उनमें जैसे बाकी की कम्युनिटीज में होता होगा वैसे उनकी कुछ अलग टर्मिनोलॉजी वगैरह तो होगी, लेकिन जो छोटी उम्र की लड़कियां उनके पास ये लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जो पुरानी महिलाएं हैं, जो पुराने के समय के कुछ प्रथाओं की वजह से उनके पास में एक ऑक्सिलरी साइन लैंग्वेज है। ये क्यों डेवलप हुई है? कि ऐसे कुछ उनके उनमें रिचुअल्स होती थी कि जब जैसे कि कोई किसी की मौत हुई है, तो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1 महीना, जो भी रिचुअल्स वो चल रही है, तब इन औरतों को बात करना ही मना था। उनको उन्होंने उनको मुंह खोलना नहीं है, बिल्कुल बात नहीं करनी।
अब बात नहीं करनी है लेकिन घर तो चलाना है, तो क्या करना है? और ये एबॉर्शनल कम्युनिटी तो एक एक घर नहीं, पूरा वो कम्युनिटी चला रही है। तो उन्होंने एक साइन लैंग्वेज डेवलप की, और ये साइन लैंग्वेज सिर्फ विमेन ने एक दूसरे को पास की, क्योंकि टैबू तो सिर्फ विमेन पर है। पुरुष एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई गुजर गया है तो उन पर ये ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि बात नहीं करनी, सिर्फ महिलाओं पे। तो ये जो रिचुअल खत्म हो गई या टाइम चेंज हो गया, तो ये सिस्टम खत्म हो गई, टैबू कोई मानता नहीं है, इसकी वजह से दूसरी जो लड़कियां, छोटी लड़कियां थी, उन्होंने वो सीख नहीं पाई। लेकिन जो पुरानी महिलाएं हैं, उनके पास ये एक ऑक्सिलरी लैंग्वेज है। Sumerian women had a special language called Emisal, distinct from main language Emigir, which was spoken by both genders. The women's language had a distinct vocabulary found in the records of religious rituals to be performed by women, also in the speech of goddesses in mythological texts. दूसर एक सबके साथ बात करने की एक भाषा, और सिर्फ महिलाओं में बात करने की एक भाषा, जो सिर्फ रिचुअल्स में यूज की जाती है, और जो उनके माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें उनकी जो देवियां है वो भी वही लैंग्वेज यूज करती। तो ऐसी भी कुछ अब जो लास्ट एग्जांपल दिया है वो एंथ्रोपोलॉजी में जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम जेंडर पर्सपेक्टिव ये हो गया। जो बीच वाला एग्जांपल दिया है वो साइन लैंग्वेज का है। तो साइन लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लिंग्विस्टिक्स का, और उसमें जेंडर का कैसा होता है। और जो पहले दिया मैंने लेवेंडर लिंग्विस्टिक्स, तो वो ट्रांसजेंडर से आया। तो ये जो लैंग्वेज जेंडर, ये जो बातें आ रही है, इसका असर बहुत स्ट्रांग और बहुत इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी है, जिस पर रिसर्च करने के लिए हमारे पास बहुत सारा काफी टॉपिक्स फील्ड्स अनएक्सप्लोर्ड अभी भी है। लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे कि हमारे संस्कृत प्लेज है, क्लासिकल संस्कृत प्लेज है, उसमें मेल कैरेक्टर्स प्रोटैगोनिस्ट संस्कृत यूज करते हैं, सब महिलाएं प्राकृत यूज करते हैं, और कौन सी जाति के इसके अनुसार बाकी के कैरेक्टर्स अलग अलग भाषाएं यूज करते हैं। तो कोई भी संस्कृत प्ले जो है वो पूरा संस्कृत में बिल्कुल नहीं है, वो हो सकता है 40% संस्कृत में है, और बाकी सारी काफी सारी उसमें लैंग्वेज वैरायटीज यूज की है। एंशियंट ग्रीक में जो एविडेंस पाए गए हैं, जैसे कि एरिस्टोफेन्स की कॉमेडीज है, उसमें भी पाया गया कि विमेन और मेन की डिफरेंट डायलेक्ट्स कह सकते हैं या वैरायटीज है। गैरीफुना ये एक अफ्रो इंडिजिनस लैंग्वेज है, अफ्रीकन कैरिबियन डिसेंट की लोगों में पाई गई। तो उसमें पाया गया है वोकैबुलरी स्प्लिट बिटवीन टर्म्स यूज्ड ओनली बाय मेन एंड टर्म्स यूज्ड ओनली बाय वुमेन. This does not, however, affect the entire vocabulary, but when it does, the terms used by men generally come from Carib, and those used by women come from Arawak. अफ्रीकन और अरेबियन डिसेंट की ये कम्युनिटी है, लेकिन जहाँ टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, पुरुषों ने ये टर्म्स यूज करने, स्त्रियों ने, महिलाओं ने ये टर्म्स यूज करने हैं, तब उनके ओरिजिन्स दो अलग लैंग्वेजेस में पाए गए। ऐसा क्यों हुआ होगा, इस पर रिसर्च चल रहा है, हमें पता नहीं है। और हो सकता है ऐसी केसेस इंडिया जैसे, क्योंकि ये तो मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल कम्युनिटी रही है हमेशा से, तो काफी सारे इंस्टेंसेस हो गए जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड होंगे। वैसे ही ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में भी पाया गया है, सेपरेट डायलेक्ट फॉर मेन एंड वेमेन पाई गई है। लकोटा लैंग्वेज है, वहाँ एनक्लिटिक्स वर्ड्स प्रोनाउंस विद वेरी लिटिल एम्फोसिस, जैसे हमारे शॉर्टन फॉर्म्स होते हैं ना, इन कांट, उस तरह के जो एनक्लिटिक्स होते हैं, उसके रिलेटेड डिफरेंसेस पाए गए हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो दूसरे दूसरे लैंग्वेजेस में दिखाई पड़ते हैं, जिन पर रिसर्च हो रहा है। To motivate you to start your own research, start exploring your own languages, start exploring different varieties related to your languages, and maybe you will find a place in sociolinguistics or gendered language discourse forever. These are some books to help you, and this is the TED Talk which I had asked you to listen. So we don't have time to listen to this together, so I hope you will listen to this later on. This is not about language and gender, this is about how language shapes our thinking. Thank you very much. अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
तो आप आपके क्वेश्चंस लिख सकते हैं। Are there any questions? अगर किसी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन है तो हाथ रेज कर सकते हैं प्लीज। आगे का जो रोल नंबर है, रोल नंबर 43। आर यू देयर? रोल नंबर 43। हाँ सर, रोल नंबर 43। यस। हाँ, हाय। हाँ yes, yes. सर ऐसा लगता है कि किसी को क्वेश्चन नहीं है। आप वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज कीजिए सर। हाँ, यस सर। HRDC डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, मराठवाडा युनिव्हर्सिटी, छत्रपती संभाजीनगर, UGC मालवीय मिशन, टीचर ट्रेनिंग सेंटर, refresher course. Today's morning, first and second session, resource person is Dr. Tripti Karekati, Madam. Tripti Karekati, Madam, gives detailed information on the topic of language, gender and power. Through her lecture, she gives information on the topic of exploring women's speech patterns and also on many other issues like bachelor and spinster, change the gender, two areas, dynamic social construction models 2000 work, aggression as well as language power. She presented the topic and gives valuable guidance. I thank Madam on behalf of Malviya Mission Teacher Training Center. Thank you, sir. यस मैडम। यस पार्टिसिपेंट्स, अभी ये सत्र यहीं पे खत्म होता है। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक Thank you very much. Thank you, everyone. for delivering this interesting lecture. Yeah, and this lecture is Thank you, also madam. available there on YouTube. Thank you, ma'am. Thank you so much. If yes ma'am, thank you very much. We'll stop this session now. Thank you, ma'am.